जिंदगी भर का बैर है न्यूज़पेपर से, चाहते हो 10 दिन में ठीक हो जाए। तो कितने दिन पढ़ा है न्यूज़पेपर? बचपन से लेके आज तक कितना न्यूज़पेपर पढ़ा है? बहुत पढ़ा है सर, बहुत पढ़ा है भाई। मैंने कभी नहीं पढ़ा था यूपीएससी से पहले। आई जस्ट यूज टू लुक एट द स्पोर्ट्स न्यूज़ और छोड़ दिया। सेम है ना, मैक्सिमम का होगा। हाँ, इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ते थे तुम? अभी तो पढ़ते हो, पहले क्या किया पुतिन ने? क्या गलत किया पुतिन ने? क्या गलत किया जिंदगी में? चलिए, so let us just first set the stage for this. Okay, so online students, am I audible to all of you? Good afternoon to all of you. Today we'll be discussing about each and every small thing. Okay, so please make notes. बाद में ये मत करना ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। अभी जितना डाउट है आज पूछ लो, पूरा आपको 2-2.5 घंटा मैंने इसी के लिए डिवोट कर दिया है। ठीक है, जो पूछना है पूछो, लेकिन रेलेवेंट। जिसके पास न्यूज़पेपर नहीं है, एक आधा न्यूज़पेपर यहाँ से ले लो। ओह, इन योर हेड, बाद में यही दिक्कत हुई है। लो, इस पर मेल किया सिलेबस। हाँ हाँ, वही भेज दो, सिलेबस भेज दो। तो कौन सा न्यूज़पेपर वैसे अच्छा लगता तुम्हें, जो पास करा दे? द बेस्ट न्यूज़पेपर जहाँ से क्वेश्चन आ जाए, विच इज रेलिवेंट फॉर अस। बट एनीवे, मोर और लेस सेम ही रहती न्यूज़। थोड़ा सा इशू बस हिंदू में ही रहता है, इट्स विद आइडियोलॉजी। विल रीड फ्यू एडिटोरियल, यू विल अंडरस्टैंड how they are going to write, and the same issue how it is written by Indian Express. So we'll see that also. हो गया? कहाँ से आ रहा है ब्लॉक? यहाँ पे Z+ सिक्योरिटी है ब्राउजर में, कुछ नहीं करने देंगे। ये सिर्फ सिलेबस पर्पस के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड व्हाइल वी बी स्टडिंग न्यूज़पेपर। Let us start. Okay, so the first thing is, it's not just about reading newspaper, it's about reading it effectively. What is the meaning of effective? Few things are going to be part of it. The first thing is the amount of time that you take. How much time generally do we take for reading newspapers? 1.5, even up to 2 hours. बहुत कई बार हो जाता है, मतलब हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। सिविल सर्विस भी था, है ना, कि सिविल सर्विस पढ़ना था या क्या, किस लिए पढ़ रहे न्यूज़पेपर। पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट to make it effective. Purpose should be very clear. There are so many magazines, so many newspapers. You have monthly magazines also from various institutes. Okay, so the main thing for all of us is how to keep it effective. Which part of the newspaper should be dealt by us, which part can be made notes by the institutes, which we can use readily. हर चीज का नोट्स खुद से बनाना काम का नहीं होता है. Make it very clear for yourself, and that is why we have to make it effective. But before making it effective, there is one thing which all of us need to understand. भाई effectivity आएगी कैसे? That effectivity will start from, first thing is syllabus. It is very important. Please remember, before reading newspaper, it should be very clear to all of you. If the syllabus is not clear,
will read many such topics which are of no use. So first fundamental point to keep it effective would be syllabus. And second, perhaps even more important, okay, that is how we do the PYQs. Why PYQs? Because each and everything which will come in the paper cannot be written down in the syllabus. If they say bilateral ties of India, so what is the meaning of bilateral ties? You'll get to know which kinds of bilateral ties are being asked in the previous year questions. Okay, which kinds of questions are coming in prelims from IR, which kind of question are coming in the mains. There is a very important distinction between prelims and mains. When you specifically read about mains, you have to extract some logical points. But when it's about prelims, it's just a matter of few facts. So your newspaper reading is going to change depending upon आपने target किस चीज को कर रखा है. Normally all of us when we start हम differentiate नहीं करते. We just read an article, we'll say हाँ ठीक है, पढ़ लेते हैं, देखो तुम्हारा भी सुन लेते हैं, तुम्हारा भी देख लेते हैं, है ना? Everybody has a viewpoint. But please keep these two things very handy with all of you. Whenever you read newspaper, these two things will be side by side. At least syllabus. This you can do even weekly or twice in a week, it's with you. But without this, we'll never get to the depth of newspaper. We'll never know which part is important, we'll never know which part is less important. Plus, it may happen that you may be reading all the articles regarding only few part of the syllabus, but the rest are remaining. Like many of you will ask, sir, ethics के लिए तो newspaper में कुछ आता ही नहीं है. एथिक्स के लिए तो कुछ आता ही नहीं, आता है एथिक्स के लिए, हम पढ़ते नहीं है उसको. वी डोंट स्टडी इट लाइक दिस कि भाई उसको एथिक्स के लिए भी प्रिपेयर कर ले. व्हाट विल द मैगजीन्स डू? दे विल पिक अप एनी 4-5 रैंडम इश्यूज ऑफ एथिक्स, दे विल पुट इट देयर, यू विल बी लाइक ओके इट्स वेरी गुड. वो एग्जाम में नहीं आता. सो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इफेक्टिवली requires a lot of things. The first thing is syllabus, second thing is PYQ. Like I already know both of these things. तो मेरे लिए पढ़ना बड़ा आसान होता है. द वे आई कैन रीड न्यूज़पेपर, अभी आप लोग वैसा नहीं कर पाओगे. बट एटलीस्ट इफ यू डू दिस फॉर अ मंथ, ओनली अ मंथ इज रिक्वायर्ड एंड ऑल ऑफ यू कैन बिकम वेरी एफिशिएंट. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी स्पेसिफिक टॉपिक, बिफोर गोइंग थ्रू एनी ऑफ द स्पेसिफिक आउटलाइन, आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज टू थिंग्स. विल शेयर दिस पीपीटी विद यू. दिस फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों चीजें साथ में रखो. इफ यू विल कीप इट 50-60% तो काम वैसे ही हो जाएगा. देन थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट है वो टाइम के साथ आ जाएगा. बट मेक श्योर दीज टू थिंग्स आर ऑलवेज विद यू बिफोर रीडिंग एनी स्पेसिफिक पार्ट. ओके. सेकेंड, whenever we talk about newspaper has various parts. Okay, it has few headlines. Okay, newspaper will provide you certain case studies. It will give you various examples as well as facts. न्यूज़पेपर के वो टॉप पे देखते हो राइट साइड में कभी कभार एक कोट लिखा होता है अच्छा सा, दैट कैन बी यूज इन द एसे. वो तब याद आता है जब ऐसे लिखे होते हैं कि हम वहां से पढ़ लेता. तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है that we should see that there are different parts of a newspaper. Maximum what we do, we just jump towards the editorial and we leave everything else. That is not good from answer writing point of view. Today's answer writing has become so complex. In 2013, 14, 15, I have seen that era when just writing an answer can get you selected. क्योंकि लोग पूरा ही नहीं कर पाते थे पहले तो. अब आज की डेट में कैसा होगा? बिकॉज ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, everybody is completing paper. Okay, so the differentiation of marks will happen on the basis of your content, on the basis of how many questions you have attempted. So if you want to differentiate your content, what will help you? Case study as well as examples and facts. Without this, सिर्फ theoretical perspective से marks नहीं आएंगे. In general studies, it is very much relevant to have all this. I'll tell you also, आज के पेपर में देखेंगे. Then we have editorial and opinions. These are important. These are important for what purpose? For perspective building on any specific topic. If you wish to build your perspective, it will be on the basis of these editorials. Okay. Next we see this explained section.
एक्सप्लेन सेक्शन दीज डे मेजरली इट कम्स इन इंडियन एक्सप्रेस, है ना. द हिंदू के पास उतना पेज ही नहीं है, उन्होंने कहा बस 14-15 पेजेस एंड दैट्स द एंड ऑफ इट. इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा, लेस एम्प्लॉयज, है ना, इससे ज़्यादा हमारे पास है नहीं टाइम. So naturally this section is important from the point of view when you want to get everything, want to know everything about any single issue. Like suppose if you want to ask about Jammu and Kashmir, one specific article number 370. So if a question on explain, अगर कोई article आएगा तो बहुत अच्छे से they're going to give you all the viewpoint around it. So this becomes one of the most important part. Sometimes even the editorial नहीं समझ में आता, but this is relatively easy one. Last comes the most important part from prelims point of view, the gate pass. Without this ये सब बकवास है. All of you have to keep this kind of thing in your mind. Why? Because the questions which come in prelims mostly they are not from the magazines. ये तो समझ में आ गया होगा अभी तक. Mostly they are not. And how does UPSC find it out? So just download the booklet of an institute, put it in ChatGPT, give me a topic listing, what all information is covered in that topic. फिर वो कहते हैं चलो ठीक है इस पे एक लाइन यहाँ से देंगे, one will go from outside. Easy. I can do that for all of you. But the important thing is we have to learn to identify things. Like suppose if a place is in news, we should know where on the map it is, because many questions in geography are directly coming from here. Similarly, whenever a new terms come in the news, like you're reading, you see some stock market news is coming up. Now stock market news has become important for UPSC also, at least the basic part of it. What is CDSL, what is SEBI, what is beta? All these terms have come in the paper 20, 21, 22, 23. Every year question is coming from financial literacy. So on such types of topics, they are become very relevant for prelims. Even if they are not relevant for mains, even not for interview, but they become very relevant for your prelims. So we have to chalk out those things. Ki bhai, this is prelim specific news, and you can make a small note for that because it will hardly take 2 to 3 lines. But for the rest, we have to decide how much time can we devote and how we can get the maximum out of it. So I hope this thing is clear to all of you. Categorization of newspaper, because newspaper is not like this कि सिर्फ editorial खोला पढ़ा और निकल गए छोड़ दिया. There was a topper of I think 2012 or 2011. At that time I was just starting reading the newspaper. So he said very beautiful thing. He said many a times what newspaper do, they also have this suggestion column. आप में से तो कोई सजेशन देता नहीं होगा. Your only suggestion is थोड़ा सा टॉपिक कम करो, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए. But few enlightened people, they give opinions on these editorials. So that person used to pick them up, okay, and used to make notes for suggestions for governance. Very intelligent work. Like suppose if there is a scheme, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, an editorial came, okay. Next day somebody has given some inputs. These are the problem at bank level, these are the problem at rural level, these are the problem at technological level. These things you will not find anywhere. So everybody has a different way of looking at newspaper. Some of you may be doing very well on your own also. तो जो भी मैं बताऊंगा एक लेवल तक उसको समझना है. इसके बाद ये देखना है कि हाउ मच टाइम आर यू टेकिंग फॉर दैट. अगर एक पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है तो कुछ चीज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा. वी हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम. एक चीज़ कम कर लेंगे. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, सम गुड प्रैक्टिस इज ऑलरेडी विद यू. सो कीप कैरी ऑन विद दैट. Whatever I'm going to discuss today, don't just go 100% into this. I'm able to do this because it's been a long time. Okay, but समझ में आया? Now, let us just see some headlines. Okay, we'll come to newspaper also, but first let us see some headlines. So if we see some headlines for today, so what are the headlines that you have seen? Like one is with respect to CBI to probe Manipur sexual assault, one killed as violence continues.
Okay, which part of our syllabus is it referring to? Is it just about internal security? The topic is always interconnected. It's not having only one relevance. So I'm giving you only 1 minute. Just think where all you can use this example. And if UPSC can make a question on this, what kind of question it's going to be in prelims and in mains? Just think for 1 minute. Okay, don't jump, just think. Essential newspaper reading will always remain relevant. Okay, no matter what or what is not, it will always remain relevant. But you have to think how the questions can come and which specific part is it referring to. Good, good. Okay, so position of women, social justice, yes. Just day before yesterday, we were talking one topic in feudalism about it. This is what it is. Okay, yes. Anything else? Center-state relation is very important here. Okay, because whenever we see CBI is under the control of union or the central government. And whenever CBI probes comes in, why do we go for CBI probes? No, politicized are all the issues are politicized. Means that doesn't mean the CBI is non-political association, has no lineage towards the ruling government. It has always been linked to that. But what do you think? Why CBI? But do you think it is unbiased? यूनियन की तरफ से क्या होता है यार? It is because of the acceptability for the masses. We as people of India think CBI is the best body. So it's a perception which is leading to this. Second, conviction rate. Normally the conviction rate in India, it's hardly 4% if you say judiciary. But here the conviction rate goes all more than 50%. So efficiency. Okay, so whenever you see any example, last to last year UPSC asked a question about CBI. That CBI is a caged parrot. मैंने नहीं बोला है. It's a caged parrot. Whatever the master says, it's going to do according to that. So how can we say it is impartial when the Supreme Court is passing such directions? You will read one statement today itself, what they are saying about ED. So it means this topic has CBI as an institution. Any question can come in your GS paper too. As an institution, okay? Manipur, yes, even in post-independence, a question can come on Manipur history. Why is it happening in Manipur? Question can come in IR also with respect to the relationship between India and Myanmar. Question can come even in GS polity from different point of view. What is the spatial status of Manipur? Why am I saying you have to see the PYQs? Because I remember all of them. 2013 UPSC asked a question, something was going on in Nagaland. What are the provisions of the spatial status given to Nagaland? In the light of the recent event, evaluate. If they ask you this question today, आप सब newspaper पढ़ रहे हो ना? All of your heroes? What are the special provisions given to Manipur? This is your newspaper reading.
whenever any issue is highlighted to a very high level, as a student of mains, you have to think differently. Okay, you have to see the PYQs to get to that level. Okay, this question can also come. If you're just preparing violence or देखो, violence is an outcome of some conflicts. Some conflicts are happening between two communities. That is happening because India has a specific kind of pact with Myanmar. Same tribals are on the both side. Okay, then the question comes over the issue of reservation. There are so many things which are linked to this. The root cause is different. What is happening today is completely different. With respect to governance, state government is not able to handle law and order. Don't you think it can be linked to even presidential rule? If violence is going, what is the provision? Breakdown of constitutional machinery or state machinery. Don't you think it's an example of that? I'm not the judge, I'm just asking. What I'm saying, UPSC may not ask this question, but they say, what are the various provisions under which a president rule can be implemented in any of the state? And it may be directly linked to Manipur. Because previously when these things happened, when communal riots happened, this happened in UP, this has happened in many of the states. But right now, the ruling dispensation at state level and union level, they are same. Suppose this would have happened in Delhi. Suppose this, I'm not against the government or for the government. This is only about whenever you have rivalistic players at state and central level, then there's always a chance that this could happen. Just by looking at this PYQ, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा क्या क्वेश्चन आने वाला है. All of you just know internal security. So tell me, what within internal security, what kind of question will come? All of you are saying internal security. Shabash. Next question. What kind of question will come from within internal security? Because until you are very clear, you will not be able to write a good answer. Tell me. Why two tribes are fighting? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है? मे बी. दिखाओ एक बार कौन सा PYQ पढ़ रहे हो? Yes. There's a topic in internal security which says underdevelopment led extremism. So in this region there is underdevelopment now, nevertheless. That's why the conflicts are of higher level, and this leads to extremism, even though that topic is mostly related to Naxalism. But it becomes prominent even here. What is the use of technology? How cyber security became a threat when this is happening? So many videos are coming. Suppose so it came on social media. It must have been running around at the local level. That also fueled the riots. There is an Information Technology Act. Amendments are there. That must have been used here also. Time and again in India, Jammu Kashmir, here, Rajasthan, specifically Jodhpur area, internet is stopped. The question can come even on that also. I'm not saying by seeing any one topic, you should think like this. ऐसे बोलोगे सर 1 घंटा बोला था 15 मिनट तो आपने ऐसे ही निकाल दी, और अभी तो सिर्फ हेडलाइन पे गए हम, अभी तो टॉपिक भी नहीं पढ़ा है आपने कोई. You have not read it. I'm just asking all of you to think. Whenever you see any specific topic, have PYQ by your side, try to link it with that. Because until you have this kind of analysis, becoming a topper will always be difficult. And this doesn't come in 1 or 2 days.
This requires persistence across subjects, because you'll always find these kinds of questions coming in mains, paper 2, paper 3. Sometimes a regulatory body question can even come in paper 3. It's not necessarily in paper 2. Sometimes a question from disaster and environment can come in paper 1. Even IR question have come in paper 1. Okay, see paper of 2014. How does India see itself in Africa? It's more of a IR question, but it came in paper 1. 2016, South China Sea issue. They asked in paper 1. आप पढ़ के जाओगे नहीं, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, पेपर 2 का क्वेश्चन यहाँ क्यों डाल दिया? It doesn't happen like this. It happens like this because look, there are so many coaching institutions, everybody is trying their level best, okay, but UPSC has to be always above us, and if you want to breach this, उससे ऊपर चलना है तो खुद से भी एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा, ठीक है? I hope I have made myself clear to all of you. I've taken more time at this because I wanted to make a point. Whenever you see an issue, at least your mind should be working. By I should know the constitutional provision, if there is any specific article number पता होना चाहिए. 370 and 371. These were the two articles. कि कौन से आर्टिकल में क्या है? I should know the specific provision. Suppose UPSC just say कि what are the specific provision for the northeastern state of India. In prelims, if they ask this question with respect to tribal areas, in which of the following states of northeast do we have the autonomous district councils? They can ask such a question there very easily. They can ask geography question, boundary questions from the state. They can ask the rivers of Manipur. They can ask which of the northeastern state has the biggest border with Bangladesh. अगले दिन आके बोलोगे सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? I've just taken one issue. I can give you n number of questions, and this is helpful because if you start like doing like this, inside the enlightenment, at least for UPSC, is there, and all of you have to think like this, because no issue, what the majority of the public is going to see, try to understand, is only violence, and nobody cares after a point. This is how the societies are built. Everybody is busy watching movies. Have you and me done something different after watching Manipur violence? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो वही तो आपको जानना है. But what I'm saying कि does it matter to us as such? क्या कर लिया हमने as a community? Because this is the responsibility of the state. आप और मैं जाए कुछ कर नहीं पाएंगे वहाँ पे. But the state administration which is there, they are finding it difficult to control it because of the geography of Manipur. It's very easy to control cloud in Rajendra Nagar, in Delhi, in plains. Go to such areas, heavily forested. So next time if a question comes on the amount percentage of forest in Manipur, if they ask this question, what will you do? You'll say, यार वो तो याद किया था कितना violence था गया वहाँ पे, this and that. What will you do? This is a very logical question that put these four states in the chronological order of their percentage of forest area. रोज आ भी रहा था न्यूज़पेपर में, but you were not looking at it because in this direction. Whenever we talk about dichotomy of education without values, essay, Northeast we have one of the highest literacy states. See, education without values. What's the parameter of education? Education is a very ambiguous term, but for literacy we have criteria. 7 साल के होना चाहिए, ठीक है, and read and write in any of the language. तो मेरा छोटा बच्चा बाबा करके घूमता रहता है इधर से उधर, but until he becomes 7, तो कोई भी लैंग्वेज साइन लैंग्वेज बोल रहा है, we cannot call him illiterate. But
very high literacy in Northeast, but still it is happening. So एक specific case study को use करना सीखो in multiple times. This is the biggest challenge of newspaper. Once you have these interlinkages, you'll read less and you'll use more. Like if I am writing answer, आपको समझ में आ गया, मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ कैसे भी तरीके से. I can use it related to CBI, center-state relation, internal security, position of women, literacy, forest administration में challenges क्या होंगे, etc. etc. This is what newspaper is all about. Same news can be written in multiple times. Multiple types of questions can be made by UPSC for prelims, for mains. By just having a glance at it, आपका as a aspirant, you should have this anticipation. Okay, this anticipation is required कि हाँ ये चीज ऐसे आ सकती है. This is the analysis part. Just plainly reading news is never going to help you out, and UPSC knows it. They know which thing is coming in the newspaper, which thing doesn't come in the newspaper. So they'll give you one statement which is there in the newspaper, which is also in your magazine. It's the second statement which kills your hopes and aspirations. And then they say which of the following are correct. 1 only, 2 only, 3 only, 4 only. मतलब वो डिपेंड करता है उनके ऊपर फिर how they want to play it. But as an aspirant, I'm asking all of you, are you able to understand one thing? But just having a look at one thing. That's why. Please write it down. All of you have to study your prelims and main syllabus very clearly. Okay? For starters, I would say रोज 15 minute devote करो to your prelims and main syllabus. Within a week, you'll memorize each and every word. Each and every word you'll memorize. Then focus on the PYQs because syllabus is done. See which kind of questions have come in paper 2. Which kind of questions are coming in paper 3. If you're reading an article, you don't even know कि यहाँ से question क्या बन सकता है. कोई फायदा नहीं उसको पढ़ने का. छोड़ दो. Literally छोड़ दो. This is the most important approach of becoming a topper. Whenever you read something, you should be able to at least get it in your head. What kind of question can be prepared from here for prelims or for mains? Unless what will happen, you'll say point number 1, point number 2, point number 3, पूरा पेपर ढर दोगे, शाबाशी भी लोगे अपने घर से, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा. And that is where it is going to be painful. कि भाई मैंने तो सारा किया था अपना. And you'll be reading multiple things and not able to use them in the answer writing. Answer writing is, आप किसी भी टॉपर को देख लो, they don't read beyond a point. That's why many of the toppers, they will say to you कि 1-2 साल न्यूज़पेपर पढ़ो फिर छोड़ दो. Then you can rely on the monthly magazines also. Do you know the reason for this? Because they have already covered this static very well. Okay, static has been done very well. So they already have all the interlinkages of the syllabus. They know how to use the same example in different answers. And once you reach such a capability, let's be very clear, 1 साल ढंग से newspaper पढ़ोगे ना, if you just read it for one specific year, just 1 year, the issues are not changing. Same issues are there, only political issues are changing, Bharat versus India. But from Indian perspective, then it is same. It is same. कौन सा नया इश्यू आपको दिख गया है सच? वही चाइना वर्सेस इंडिया चल रहा है, वही कहानी, वही लद्दाख की लड़ाई, वही अरुणाचल की लड़ाई. कब से चल रही है? Do you think it's a fresh issue? No. Same issues are going on. That's why after a while, newspaper loses its value from exam point of view, not from intellectual point of view. That will always be there. But from exam point of view, because you'll be reading less, but you know how to connect it to different parts of the syllabus. So I hope this first thing is clear to all of you. Whenever you are going to study, number 1, you will know from which kind of questions can be created. Just do this for next 1 month. You will see a drastic change in your personality.
you'll see a drastic change in the way you approach prelims as well as mains, because you are not doing it consciously on daily basis. You're not thinking on daily basis. एक दिन किसी को मॉक टेस्ट लगाते हो, उस दिन हाय तौबा मचाते हो, फिर 2-3 दिन बाद गिव अप करके फिर अपना जो मन में आया करते रहो, फिर किसी ने बोला यार यू हैव टू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, फिर से कर लिया, फिर हाय तौबा, फिर चलती रहती है गानी. You have to become creative. You have to learn what is required, what is not required. Because look, the problem is whatever you watch on YouTube, many things, they will never take care of the entry cases. Some topper will say newspaper mat padho yaar, magazine se ho jata hai. When they are saying it, they are not telling how much they have studied before. You see it only from that year point of view. तो 22 में सेलेक्ट हुआ तो आई थिंक ही मस्ट हैव रेड फॉर 1 ईयर. ये है पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं, चल जाता है, मेरा भी हो जाएगा. एवरीबडी इज नॉट सेम. People may do same level of hard work. Do you think the result will be same for everyone? It will never be there. So you have to see it from your perspective. अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ये चीज़ समझ में आई? Just tell me 1, 3, 4. Which specific areas can we use them? Leela, that's what I was telling you, that today I am going to make you understand how to study. Okay, what is happening? You are reading, outcome is not going to come, and if outcome is not going to come, what will we do? Yes, so many people have said like cyber security, left-wing extremism, deep fakes, religious violence, communal violence. Like if you see the first one is mostly related to one of the act, Anti-Defection Act. So you can just take the example that recent, I know Maharashtra has become the epicenter of defection. And one party, two party, every year one party is breaking. So this is happening. So you can use it. Don't have to write the name of the leader. You have to just use that recently in Maharashtra, 2 mainstream or 2 regional parties have split up. So first one can be easily used for that. If you see court order framing of charges against 7 accused in Sultanpuri hit and drag case. So whenever a such question comes in ethics, law and order specific, okay, you can use it as an example. Stapled visa for Arunachal athletes unacceptable India. So it has many dimensions or one dimension. Mostly it is important. Why? Because all of you know the historical part. McMahon line was drawn between Tibet and British India. Okay, as per there was a Shimla Convention. So as per that, Arunachal Pradesh was accepted as part of British India, and we were under the impression China is going to accept it. But what happened after independence? First China took over Tibet, then said Tibet was not having the sovereignty to sign the Shimla Convention. So they said Arunachal is a part of Tibet. Since now we are in control of Tibet, this is our part. So that's why this issue comes. Stapled visas. वो हमारे पासपोर्ट में स्टैंप भी नहीं मारते हैं, अलग से उनके पेपर पे स्टैंप करवाते हैं. That people of Arunachal, they do not give a recognition that they are part of India. So it's a tussle over that. So this always remains an issue in India and China relationship. In Manipur, we had those many dimensions. In the rest of the example, it's hardly 1 or 2 dimension at max. So when you have important issues, उनको अपने length and breadth में prepare करना है. For the rest, हाँ ठीक है यार, खत्म, इनमें और कुछ है ही नहीं. This will hardly take 5 to 6 seconds. You cannot give same amount of time to every article. It's next to impossible. Some are relatively good, some are not of that much value to us. Like if we had 4 headlines, why I chose this as the first one? Because I knew this question will come. Sir, ऐसे करेंगे तो दिन में कुछ होगा ही नहीं. For the rest, it was hardly 10 to 15 seconds. But for this,
I have to keep this in at least in the priority list. कि भाई this topic has been in news and any amount of question can come. So here I would prepare from mains point of view. Here I can only just indicate to myself, okay, twice or thrice this question on anti-defection law has come. है ना? All of you know who takes the decision in anti-defection? Speaker. That is also a part of controversy. That is also a part of controversy. So what I'll do, I'll just make a list. In paper 2, this topic can come because this is coming in news time and again. There are observations of Supreme Court also. So I'll just say कि भाई बाद में जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये वाला टॉपिक एक बार अच्छे से कर लेंगे. So what I used to do every day, I used to make a list. So भाई this topic is in news. Even if I'm not able to do it today, at least I'll know this topic should be prepared when I'll be writing mains. Okay. Many of you are just thinking from the point of view of कि भाई prelims तो पास हो जाए, तब देखेंगे. ये सब बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई करते हैं पहले. बट यार जब हो जाएगा, what will happen? Last to last year, I had a student. He was from Gujarat. Okay. 2 महीने ऐसे ही टाइम पास कुछ पढ़ा, प्रीलिम्स निकल गया. He came to me, सर मुझे मेंस का सिलेबस ही नहीं आता है, क्या करूं? और मैंने हिस्ट्री ऑप्शन भी डाल दिया. उनका बेटा अब क्या करें बताओ? कह रहा सर हम क्या करें, अब थोड़ा देख लेते हैं. सो प्रीलिम्स पास हो जाएगा भाई आगे पीछे. The only problem is if you are not prepared for mains, if you are not very well connected with the syllabus of mains, it also become a limitation in prelims. Sometimes many questions they are directly coming from the mains knowledge. You see the topics which are coming these days, judiciary governance specific topics, they are mains topics but they are coming in prelims. So mains जितना अच्छा रहेगा prelims में भी उतना फायदा होता चला जाता है. You have to practice specifically for prelims also, but this is the time where mains is to be practiced. Okay. If we see case studies, so what kind of case studies can we find in the newspapers? Okay, what kinds of case studies? Like if we see G20, 39 MNC come together for circular economy coalition. So can you see this? What is the meaning of circular economy? These are the kind of topic which are important from prelims point of view. What is the meaning of circular economy? Recently a circular coalition was created by 5 countries, but how many are there? MNCs है, country नहीं है. सब गिनने लगे, हाँ 39. That's how you have to be aware कि MNC है या फिर countries हैं, NGO है और state based है. Such case studies can be used, like suppose if a question is on environmental pollution. So what this circular economy is trying to do, it is try to reduce the waste that we have in the economy. That becomes a circular economy. Okay, so this is a very good case study. Like suppose if a question comes, how can we reduce environmental pollution in India? Then can this be one of the fact? India has become a part of G20. We are having the presidency this year. In September we'll have a summit. All right. So this becomes a good case study. Here Delhi's dirty linen hung out to dry. So what has happened specifically? तो हमें पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, कौन सी specific industry है, why it was closed, or what could be the reason for that. So this become a case study. And if some industry is creating a lot of pollution, suppose, and it has been shut down, but are these people given some other form of employment who are engaged in those industries? Okay, so these are the kind of case studies you will find in GS4. That as per the environmental regulations, this area, okay, this area is not following them. That's why this industry should be stopped. Government में तो regulation है ही, Environmental Protection Act. Okay,
But at the same time, if this industry is stopped, the whole economy of the local area will suffer. Then they'll say, write down, what are the choices available to you? Number one question. Number two, what steps would you take so that the interests of the area are not harmed? Everybody leaves these kinds of topics, but this is from where UPSC is going to create the case studies. What steps were taken by the administration? This is how you prepare your paper 4. Like in Manipur, which kind of steps have been taken? Suppose this year a case study comes on this whole issue. Okay, that the conflict has widened, violence is increasing. Which steps will you take? At that point of time, what will you do? Well, try to protect the law and order of the state, this, that. लिखोगे कहानी अपनी बैठ के. So you have to be aware also. Take some interest how the administration is being run. Because in ethics, this is going to become very important. You have to take some specific steps. Like one of the year when I wrote mains examination, there was a case study coming time and again. An article was coming on mining. Okay, what steps to be taken? और वही केस स्टडी बन के यूपीएससी में आ गया. अब पढ़ा हुआ था अच्छे से न्यूज़पेपर में कि what steps should be taken. नहीं तो आपके दिमाग में माइनिंग क्या होता है? What are the repercussions of mining? How many of you would know? What will say environmental damage, this, that. फिर क्या करोगे उसके आगे? How illegal mining is also linked to the mafia. In which step, what kind of steps have been taken so far? Which legal provisions can be used? Because you'll say, I'll take a strict decision. और strict decision क्या होता है? कैसे गाल पे छोटा चाटा मार दे, माइनिंग रुक जाएगी उससे. So you have to be aware of administration. Okay, that's why I'm saying ना, देखो एक बार तो आपको GS ठीक से करना ही पड़ेगा. Whatever GS you are preparing, you have to do it wisely. Along with this, newspaper को संभालना भी सीखना पड़ेगा. Because I understand that doing all this in one day is next to impossible. But can you ingrain it in next 3 months? If you do it even in next 6 months, you will be able to clear the exam. Because there is always a time gap. जब समझदारी आती है ना और फाइनल बनने में टाइम लगता है. Initial my 4-5 months of newspaper reading were exactly like you. पढ़ा, अंडरलाइन किया, एक पेन से मजा नहीं आया, दूसरा भी ले लिया, फिर सर्कल करना शुरू कर दिया because अंडरलाइन में मजा नहीं आ रहा था. So we kept on doing this 4-5 months. फिर then somebody told me कि नहीं यार नोट्स बनाने हैं. मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की, टाइम लग रहा था, तो I left it. मैंने कटिंग करना शुरू कर दिया. So we keep on doing this and that. So it becomes a physical labor exercise rather than a intellectual exercise. And this physical labor exercise is never going to give you any result. Intellectual exercise is like this. Okay, for today you may be like this. Okay, from previous topic, only 2 areas you were able to prepare that day. But the rest at least you can note down. So that when you revise geography, at that point of time, you can give more specific focus to Manipur. Last year, Ukraine was in news. It came in prelims. Geography क्वेश्चन के उन्होंने ये नहीं पूछा कौन सी न्यूक्लियर मिसाइल आई थी, क्या था, कुछ नहीं पूछा. Pure geography centric question. So whenever you are studying on some specific issues in a year, there will not be more than, I would say, 100 issues for sure. There will not be such issues like Manipur every day in, day out. And you must have seen from last 15-20 days, this is the main issue. Even in the parliament, this is going on. When it goes into parliament, then there are some other repercussion. Then comes the no confidence motion. The non-confidence motion comes. So then you have to know what is the meaning of no confidence motion. Is it mentioned in our constitution? Yes, no. Why are you looking at me? You can say yes or no. It will harm your reputation. That's why ambiguity and smile is the best thing at this point of time. Question came in 2014. I was writing my first prelims. No confidence motion is not mentioned in the constitution.
थोड़ी देर के लिए तो धक धक होता है होता है ना कि है कि नहीं है because in prelims recall becomes a major challenge, and this is one theme of preparing of prelims. Is it mentioned in constitution or not mentioned? And he is right, he was clear कि नहीं sir नहीं mentioned. So this kind of clarity would be required in prelims if a question comes with respect to this. Are you able to understand this one thing? So this small news, where India has become, or 39 MNC came together for circular economy coalition. The circular economy coalition can itself be a question next year 24. It can be there in prelims. Judo player loses foot after pole falls on him in Madurai. This is the way we have built our cities. Loses foot after pole falls on him. ITO barrage goes 3 gates marred in silt. Work underway with Navy diving team on standby after recent floods in capital. Whenever a question comes on urbanization, which is the part of the syllabus that is get affected? Paper 1. In paper 1 we have urbanization. In paper 3 it's about disaster management. In 2016 UPSC asked same question on urban flooding. In paper 1 it's asked what are the causes. In paper 3 it asks as per NDMA guidelines tell what are the steps which should have been taken. Same topic, same year, एक ही टॉपिक से. एंड आप कहते हो ना कि भाई डायमेंशन क्यों प्रिपेयर करनी, इसलिए डायमेंशन प्रिपेयर करनी है. आफ्टर गिविंग पेपर विल बी चल ठीक है कोई नहीं अर्बन फ्लडिंग में पॉइंट कोई बात नहीं छोड़ देते हैं. जब नेक्स्ट डे सुबह फिर से वही मिलेगा ठीक है. और फिर एक केस स्टडी पेपर 4 में भी आया डिजास्टर मैनेजमेंट का. तो जब यूपीएससी ओवरबोर्ड करता है ना तो वो एक साथ करता है कि मतलब छोड़ना ही नहीं है, जान ले लेंगे. लाइक सी सेट परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता कोई नहीं छोड़ देंगे छोड़ो 20 क्वेश्चन छोड़ो, नहीं छोड़ पाओगे, पेपर छोड़ना पड़ जाएगा. सो प्रिपेयरिंग newspaper in a very wise manner is required. Okay, we'll see some of the articles also. Editorial opinions. Now this is one thing which you can use for enhancing your marks. There are some very prominent writers, like when you'll read Indian Express, you'll find C Raja Mohan, you'll find his name. हर IR के इशू में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है इनका. Very polite kind of articles, not too critical of the government, highlighting the importance of the initiative, etc., etc. The exact kind of article which a bureaucrat should know about, because sometimes in the Hindu criticism is very high. We'll see articles today also. Ashok Gulati is very famous for agriculture. Even a committee was formed under him. Okay, so whenever you see editorial opinions, you'll find some good personalities. You can use their name also in paper. Like paper 2 में लिखते वक्त you can talk about as per C Raja Mohan, India USA relationship is going toward this. Some keywords will come. वो हम देखेंगे कैसे कैसे keywords आते हैं. Do read the editorial by former bureaucrats. Why? They're mostly balanced articles. Even in the interview, you'll find out कि इनके opinion ज़्यादा अच्छे रहते हैं. ठीक है, few articles related non-opinion can be ignored. Pick up the keywords. Very important. Pick up the keywords. Pick up the introductions, conclusions, way forward in editorials, which are of very good study. Like suppose if Ashok Gulati says something about food security, that would be better than all your books. That would be better than even your books, whatever you are studying in paper 3, GS. So Ashok Gulati always has good articles, but sometimes he comes up with some academic articles also, like how to calculate MSP, etc., etc. वो पूरा प्राइस देके बैठे रहते हैं इधर से उधर. तो इन एकेडमिक्स में उतना याद करने का जरूरत नहीं है. बट वेरेवर यू फाइंड दैट आपके टॉपिक से क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक टॉपिक है, एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इन मेंस ऑलवेज 2 to 3 क्वेश्चंस विल डायरेक्टली फ्रॉम देयर. एंड इन GS3 many of you would know marks are not coming. 65, 67, 70 सबसे कम मार्क्स कहाँ थे? GS3. And why is it happening? One of the reason for that would be people are not writing good examples. They are just writing theoretical things. That's why very few people are able to get very good marks there. So there these articles or examples are going to help.
Okay, like just see, S. Jaishankar, he says India is recognized as a voice of peace and security. अब इतना अच्छा लाइन है ना, सेल्फ बोस्टिंग, पीस तो है दिख रही है मणिपुर में, है ना, और सिक्योरिटी कहीं और भी दिख जाती है, बट कैन यू राइट इट? ये स्टेटमेंट इतना अच्छा है, इसको एस्से में यूज करो, इसको पेपर 2 में यूज करो, इंटरनल सिक्योरिटी में यूज करो, कंक्लूजन में डाल दो, है ना, एज ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज सेड, India is recognized as a voice of peace and security. That's why we should be able to take care of this internal security. It will increase our global presence also. So, writing introductions, conclusions is always going to be good. Such quotes are always going to add value to your preparation. Okay? So, please remember them. Then, global coal consumption in 2002 was an all-time high. A good example, where all can we use it? Environment issue, good, we can use it there. Climate change, 1.5 डिग्री की बातें करते हैं, हाँ. What energy security means? We are still dependent upon coal. Okay, so dependency, renewable versus non-renewable. Yes. Anyone else? We can talk about mining also. Coal बिना mining के तो आएगा नहीं. So mining is going to happen. Let us see few more. 10% the proportion of that US and EU could count for this year. 8.3 billion tons coal consumption last year, a 3.3% rise from the previous year. So too many facts. This is important. Emerging economies. 70% of the world's coal consumption could be accounted for by China and India in 2023. So it means emerging economies are doing the damage. Suppose a question comes in GS3, it's about any of the important protocol, okay, or any of the important convention, COP. Okay, so there can you say this is a dilemma, but it's always like this. Can we stop the consumption today? We cannot. Okay, so there is a concept of known as carbon space. समझ में आता है? What is the meaning of carbon space? Industrialized country used coal on heavy scale 18th century, 19th century and 20th century. So they have already utilized their carbon space. But when it comes to India, हम तो बच्चे हैं अभी, only 75 years. So we should be given a window, till then we should be able to use our carbon space. So 1 or 2 facts like this reports अपने लिए बहुत सही है, अब इसको यूटिलाइज करेंगे 50 जगह. When you have these kinds of example like this or this, you will not find them even in your जो booklets हैं of any institute, and they become your USP. Because you are using some data which is different from others, and you can use it at 10 places. You can use it in paper 1 in resources, you can use it in paper 3, okay, in economy, renewable versus non-renewable, even in environment. You can use it at multiple places. If we remember data of India and China and compare it with US and EU, this becomes a dichotomy between developed versus developing. It becomes a very good case study for all of you. और देखो आसान भी है ना, 70 और 10, and 2022 for the global highest all-time high. That's it. How much time would it take to extract these 2-3 things? 1 minute? It should not take more than 1 minute. What happens when we start reading newspaper? हम बहुत ज़्यादा खुश होकर पढ़ते हैं या दुखी होकर पढ़ते हैं, and both are bad. पर्पस नहीं देखते हैं. What was the purpose of reading newspaper? We want to get a rank in civil services. We want to clear prelims.
get very high score in mains. So for prelims, if these kind of statement comes next year, that India and China account for roughly 50% or 40% and developed का जो है बाकी 60%, आप सब मान भी लोगे, because that's the narrative we have कि हम लोगों को तो कुछ कर ही नहीं, हम कुछ गलती करते ही नहीं. But those who have this idea, they can use it in the prelims also, use it in the mains also. Prelims में cancellation कर पाओगे, in mains you'll be able to write very well. If a question comes specifically on coal energy, you can use it in your introduction also. So whenever you are studying, please take care of this. Some issues are always going to be very important, like Manipur. It's a very nationwide issue. Okay, something like this, इसमें 2-3 ही dimension है. Just pick up the keyword from the headlines, or you can use the kind of fact in body of your answers. Okay, sometimes when UPSC is going to ask you some difficult questions, like important for deeper understanding. So here we have to go to explain, like the anatomy of the Yamuna flood plains. So if any question comes in prelims or mains in Yamuna, it's an important one for us. What happened? Majority of the time we say there is no water in Yamuna, pollution, etc., etc. Yamuna said, okay, I am listening. Let us meet at Red Fort. Huh? So what happened in Yamuna? Encroachment, unplanned settlements. Even Red Fort is unplanned. Everything is unplanned in India. That is the problem. And as a result of this, we are seeing lots of problems. But if you wish to read specifically, like in this heading they have given, how has rampant construction blocked flood pathways? Now flood pathways becomes a very important keyword for writing answers, okay, and impeded the river's right to expand. अब ये कभी सुना है क्या? मतलब rights only belong to living things, like I have. कितनी freedom हमारे पास? We have fundamental rights, Constitution of India, but they are saying right to expand. ये कौन सा right आ गया? If you study them, you'll get some deeper knowledge. Twice UPSC has asked question in paper 2 polity GS about the direction given by Supreme Court to Government of India. Okay, what are those important environmental legislation as well as the environmental judgments? And in those papers, suppose if you write it in the conclusion that in the recent Yamuna flood, it is important to understand that right to expand should be also be given to the rivers. तो बोले अरे बेटा ये लो मार्क्स ले लो, कितने कब से ज्वाइनिंग करोगे? Because you picked up an environmental issue on Yamuna, many times direction has come from Supreme Court. It's not the first time. On pollution also, all of you know what used to happen in last year, तो बच गए, last to last year. Those of you are from outside, ध्यान रखना after October. Delhi will become hell for few months because of pollution. The level of pollution, we have not seen it. Last year it was less. Let's hope it is the same this time around also. In 2016, I was writing mains. So much pollution, you cannot see visibly each other for 3 to 4 days. So much pollution. Air quality index was 700, 800. Obama came to India. He came up with his own filters. इंडिया से फिल्टर पे भी उन्हें भरोसा नहीं है, अपनी एयर साथ लेके चल रहे हैं. So lots of situations are like this. So then Supreme Court came in, created a committee that we will oversee the overall process of environment in Delhi. We cannot leave it to you. They came up with graded mechanism कि किस part में क्या start करना है. Whenever environmental issue comes, they are also linked to polity. They are not just linked to geography. Okay, but a geographical question can also come. In prelims, they may ask some of the tributaries of Yamuna.
देन यू से अरे रे 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 न्यूज में तो था यमुना, अभी इसकी वेस्ट वाली है ईस्ट वाली है पता नहीं यार, हमें तो यही लगा था गंदा नाला है, इसको हटाना नहीं चाहिए, डीनोटिफाई नहीं करना चाहिए था अभी तक रिवर से। These things will go in your hand. So prepare CPYQs. सबसे आसान तरीका यही है if you wish to become the strongest person with respect to current affair, with respect to how much is required. Like suppose if I read only this much, I will only pick up right to expand. मेरे दिमाग में आ गया, मतलब कहीं भी आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे आपका पेपर 2 में आ गया, पेपर 3 में आ गया, मैं तो ये लिख के आने वाला, because this is something new. What are the consequences of rapid urbanization on the floodplain? How many people are dependent on the river? So when we say they are very important for water, very important for this, that, at least you should have some case study कि this river is important for how many people of the locality. If you have that fact, तो आपका एक अलग ही रिकॉर्ड बनेगा. What do encroachments do? So just sometimes by reading the headline you can get, because कितनी बार I think at least 100 articles would have come on Yamuna. Flood. आया होगा इतना? So Yamuna wala, this issue becomes important. Because we talk about Amrit Kal, we talk about Vish Guru, we became Flood Guru. Delhi में यार, this is not happening somewhere else. जहाँ पे on 15th of August there is going to be a address. It's happening right there. जहां बोलते हैं वहीं की नींव कमजोर हो रही है. सो इट्स शेमफुल फॉर द कंट्री इवन इफ यू वांट और नॉट, है ना, शेमफुल. और हमारा मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया जो फ्लड में लोग बेचारे रिक्शा चला रहे हैं उनसे पूछ रहे कैसा लग रहा है. स्विमिंग पूल का फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर 15 days. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन सेक्शन में आपको सबसे जो मेन है, कई बार मैं क्या करता था, कीप इट दिस एज एन एडवाइस. समटाइम्स लाइक यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, you know that the issue has not developed. First day the news came, flood is going to come soon. Next day इतना हो गया, next day इतना हो गया. So I'll keep that topic in my mind. I'll not read it because within next 1 week at least good articles will come on that. So I used to save my time. If some topic is developing, like suppose the understanding that we have today on Manipur, suppose if I studied today, will it be better than the last 1 month? This also you can do for some important articles. You can wait a little. If you're going to wait, तो ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स आएंगे. और एक्सप्लेन वो फर्स्ट डे नहीं डालते, पूरा बह गया, पानी वापस चला गया, फिर इनका आया एक्सप्लेन्ड. सो लर्न टू वेट फॉर इंपॉर्टेंट इश्यूज. ओके, learn to wait, that is very important. So in these, like this, when this cinematograph bill passed in Rajya Sabha, what are its provisions? So provisions are always important. Last year you may have seen mains paper, 2 questions came from provisions. 2014 there was a question on cinematography. Right to showcase your film also comes under freedom of speech and expression, but why are they banned from time to time? यूपीएससी के पास भी देखो लिमिटेड ही इश्यूज हैं, उतने से ही पूछता है वो. सी द पीवाईक्यूज, क्रिएट थीम्स, जब भी न्यूज़पेपर में आए उससे कनेक्ट कर दो कि भाई दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम. Why, what was the requirement of that, what are the problems with it, what could be the way forward? Very straightforward topic. Okay, government may extend PLI scheme to chemicals and petrochemicals. These are the kind of questions which are relevant for prelims. Hepatitis B killed Beethoven reveals forensic DNA analysis. Beethoven पता है? हाँ? म्यूजिक भी नहीं पता. मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट में सबसे पहले ट्यून चलती है ना विंडो मीडिया प्लेयर में, दैट इज ऑफ बीथोवन. बीथोवन एंड मोजार्ट, दीज टू आर द बिगेस्ट
revolutionary when it comes to piano. But anyway, अब बीथोवन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला. क्वेश्चन आएगा on hepatitis B. Then they will ask क्या कॉज है, क्या वैक्सीन है, इज इट इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. फिर तुम आके सारी मैगजीन जलाओगे, इनमें कुछ नहीं है, बकवास है ये सब. देखो, रेवोल्यूशनरी बनने से कुछ नहीं होगा. फेल होने के बाद कुछ भी कर लो, कुछ चेंज नहीं होने वाला. द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज लर्न, emulate how toppers are being made. This is how toppers are being made. If this is the news, I will say hepatitis B. If I am writing an essay, okay, and I have to give some good information about health sector, etc., then I will use that hepatitis B is very critical or very difficult kind of disease to deal with. And one of the prominent musician, even Beethoven, तो essay पढ़ने में से मजा आएगा. I will not use this example in general studies because कोई सेंस नहीं बनाता यार, एकदम से इंडिया के बारे में बीथोवन लिख के बैठ गए. But if it comes in essay, ठीक है, कि हेल्थ, हाउ हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, कनेक्शन मिल रहा है ना अच्छा हमारा इसके साथ में. ओके, अब चलते हैं न्यूज़पेपर पे. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड which areas you have to look at. देखो, in every year there will not be more than 100 issues, major issues like this. आप काउंट कर सकते हो उनको, like Yamuna floodplains issue, Manipur violence. These are the main issues. तो इन पे एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा. For the rest it's okay. See this article. Okay, Supreme Court extend Mishra's tenure as ED director till 15 September, my birthday. तब तक ED वाले रहेंगे, उनका रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट 15th of September. Yes. So see the dichotomy. All of you know that in a modern democracy there should be difference between judiciary, executive and legislature. Okay, so what's the biggest strength of democracy? Democracy can only be sustained if we have powerful institutions. If election commission, these important agencies, ED, CBI, etc., etc., if everywhere we find the favorites of the government, do you think the institutions are going to sustain? They will never sustain. Why Supreme Court is coming time and again? Okay, so if we read this, Supreme Court extends, and see the background. Top court goes back on its earlier judgment in public and national interest after centre's appeal in the wake of FATF evaluation. However, it will not accept any further request for extension. Okay. The newspaper is the Hindu. Now, see this. This is where it's not about Supreme Court or government. It is about the Hindu and government. Are you not giving a picture here that your entire department is full of incompetent people except this one person? Okay. Is it not demoralizing for the entire, except for this one person, the entire department will collapse? So what would have happened? Government extended the tenure of Mishra ji. Supreme Court said no, replace him. In reply, they may have filed, the whole department is dependent upon Mishra ji. If Mishra ji will go, everything will collapse. Reply from Supreme Court. This is not exam centric, but at least you can remember one example, the tussle over ED or an ED director, or regular extensions are being given. Then why did we create the rules? But the question becomes, this is an election year. 2024 is an election year. You want all your best people in the different agencies. They should be the head. ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सबको अपना अपना काम बता दिया. Do you think
like this, democracy can sustain. When we see from Supreme Court point of view, Supreme Court also depends upon the personality of Chief Justice of India. Right now, who is D.Y. Chandrachud, and naturally he is not very favorable towards the current dispensation. Even he gets the trolling on social media. Okay, he gets the trolling also. But the question is not about personality. The question is about this: if Supreme Court is interfering, appointment of officer is an executive domain. Okay, it's an executive domain. It's their privilege. They have to do it. But who is entering? Supreme Court. So when Supreme Court enters, things becomes uneasy. All of you must have had this topic of judicial activism, judicial overreach, judicial adventurism. All these terms are coming, and UPSC has asked question on them in mains many times. So this becomes one of the example. What happened? It may be so that there may have been some exigency, some specific initiative was taken by this officer after the extension by the government of India. But Supreme Court nahi aaj hi hatao. So that affects the pace of administration. Even though fundamentally the extension should not have been done, but once it is done, if he is handling some important case and Supreme Court nahi main nahi manta, aaj hi hata do. So this is interference in the administration. So the questions are very important for us. One, the manner in which these directors of these various agencies are being appointed. Second, why are regular extensions given to them? Third, why Supreme Court has to come every time to save any specific institution? And fourth, the question asked by Supreme Court, why the next person, the successor, okay, is not ready? Why on the extension is given to one specific person? All of us in paper 4 read about neutrality in the bureaucracy. What is the meaning of neutrality? Not favoring any specific political class. You're just doing what has been assigned to you, not going into the politics of that. But if one person wants to stay indefinitely in one role, that means, do you think he is having neutrality? And neutrality is not there because it has turned towards political favoritism. Now, let's just read this. है ना? आप सबके पास है newspaper? Online students, you have this? Are you able, because in the camera I don't think you will be able to read this. All of you have this newspaper, please confirm. Now we are having the reading session. Okay, so just read it. Okay, take 2-3 minutes. We'll try to see what is important, what is not important, etc. और zoom करो इसको थोड़ा सा और पॉसिबल है भाई हो जाए. Let me read it with you. The Supreme Court, in a special hearing on Thursday, extended ED Director Sanjay Kumar Mishra's tenure till 15th of September to serve public and national interest. So, what's the cause? Public and national interest. Do you think this is well defined or vague? It's always going to be vague. Okay, but anyway, the court has declared Mr. Mishra's continuation as invalid and illegal in a judgment on
July 11. So this has happened in recently, okay, 15 days ago. It had directed him to quit office by July 31. के भाई निकल जाओ. However, just 4 days before the deadline, the center moved an urgent application, saving his presence in the saddle was crucial for the country to effectively sail through the ongoing evaluation by the FATF. So what is FATF? Financial Action Task Force. And who is the most favorite nation of FATF? Pakistan. Okay, there are some list in this, grey list, black list, list है ना सर. थोड़े अभी कुछ दिन पहले ही the Pakistan was taken out of it, है ना. India always celebrated when Pakistan becomes a part of it. Within the FATF, what is the institutions which are created in every country? बस अब सब नीचे देखो. Time, peace out. Financial Intelligence Units, FIUs. कैसे कैसे कोऑपरेट करेंगे? सिर्फ वो एक वहां से फोन करते होंगे, FATF कॉलिंग. What is the role of FATF? So they say the financial system, it's a group of some specific countries. कितना 30-35 के आसपास कुछ है, वो पता होना चाहिए. So if I'll read this article, FATF will become important for prelims as well as mains. Okay, that's what I'm trying to tell you. It's not about Sanjay Mishra ji. Okay, the topic which are directly related to this. I'm not saying यहाँ से कुछ ऐसा से लेके जा पाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ काम का मुझे अभी तक लगा नहीं है. टॉपिक बस रिसर्च कर सकते हैं हम कि FATF specific question can come in prelims. Second, the tussle which is there between the government and the judiciary, and the concept of judicial activism versus judicial overreach. Judicial overreach means when Supreme Court, or for that matter any court, becomes too much interested in the administration, and they even forget it that they don't have the capacity to do so. They are known for passing orders, order pass करके छोड़ देते हैं, and if that is not implemented, they have the contempt of court. They can come up with this. So that is what you have to understand from this article. Let us just go further. The government asked the court to allow Mr. Mishra. Why public and national interest? Because they say India is being examined by FATF. If we are not going to get the favorable kind of review, तो हम भी किसी लिस्ट में चले जाएंगे फिर भाई भाई. ठीक है, so that may happen. So FATF is an important body, international body. It was also related to G7. ठीक है, it was also related to G7. तो पता होना चाहिए. देखो FATF पढ़ना पड़ेगा, because this is what the government is saying to the Supreme Court. So from this topic, these are the two articles. Even though we do not have the information to read it here specifically, but at least can we make a list for ourselves? Okay. And second thing is about ED. In paper 3, internal security, there is a specific topic. Security, क्या है? Security forces and their mandate. So you should know at least 5 to 6 mandate of ED. Otherwise क्या लिखोगे? To protect India from money laundering. नेक्स्ट पॉइंट, वो मिश्रा जी का इश्यू था एक अपॉइंटमेंट में थोड़ी दिक्कत आ गई थी ऊपर नीचे. क्या लिखोगे? एज अ ब्यूरोक्रेट यू शुड नो अबाउट इट. एज अ पर्सन हु इज राइटिंग मेंस यू शुड हैव पॉइंट्स एट योर फिंगर टिप्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ईडी पे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज दिस इज 1 year अप टू द election, general election. All the bodies are going to be in news. You like it or you dislike it, it's going to be there. The government asked the court to allow Mr. Mishra, who is currently on this 3rd extension. How many extension? 3rd. And 5th year as ED chief. 5th year. Normally it should be 2 years. So what does it tell you? If a question comes that India's institutions, are they independent? What happened to Election Commission? What is happening to ED? This is the fact which I will use. Okay? And don't you think now I can get the picture? Supreme Court is not wrong. It's 3rd extension. कोई है ही नहीं का डिपार्टमेंट में नीचे. It's 3rd extension and 5 years. The country's international image was at stake. हर बार यही एक्सप्लेनेशन आता. इंडिया की पता नहीं ऐसी कौन सी इमेज है.
stressing that the court would not have entertained the government's request in ordinary circumstances, especially after declaring continuation of Mr. Mishra, okay, as illegal. The special bench headed by Justice B.R. Gawai allowed him to carry on. The bench, including, so that is not important, made it clear that it would allow no further request from the government for its extension. It said Mr. Mishra would cease to be ED director from September 15-16 midnight. The hearing, now this is not important. Are you not giving a picture here that तो ये तो देखा, the Hindu could have picked up anything else, but the Hindu likes where it hurts below the belt. ये दिखना चाहिए आज की हेडलाइन में. So this is the ideology of newspaper. Supreme Court was just passing a reference. मैं भी बोलूंगा ना यार, if somebody will say कि यार you're getting the third extension, कोई एक भी बंदा काम का नहीं है तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में. It's just a normal way of saying. But what will the Hindu do? पूरा सामने बिल्कुल पेपर के ऊपर दिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मजाक बनना चाहिए. Anyway, this topic is now continued on page number 12. तो वहां देखते हैं वहां कुछ काम का है कि नहीं है. ठीक है. Because if they give something useful to us, तो हमें फायदा होगा उससे. आगे प्रीव्यू नहीं करेगा क्या? कहाँ कंटिन्यू भाई? पेज नंबर 12. Mr. Mehta agreed that no one was indispensable. He said a good FATF peer review was a 5-year exercise. So you got some extra information how this review happens, and it's a 5-year exercise. That's why I came to this page. Okay. Next, continuity in office would help the country and decide the country's ability, help in international credit ratings, financial arrangement with World Bank. So दूसरा पॉइंट मिल गया कि क्या काम ईडी और करती है. Rather than just about money laundering, it's also tried to ensure India's image by engaging with the international credit ratings, financial arrangement with the World Banks, etc. etc. तो आपको एक पॉइंट मिल गया. It is a coincidence that July 11 audit came at the time of the FATF review. तो ठीक है, वो डिफेंड कर रहे हैं उसको. We are now in the FATF list of compliant countries. A new director would at least take 6 months to look through and understand the files. Okay. It is very sad to see center saying the future of the country is on one man's shoulders. It is the ministry official, the secretary of revenue, and not ED director who engages with the FATF. So ये चलो अपना पर्सनल चल रहा है उनका जो भी है, whatever it is. But at least एक आर्टिकल को कंटिन्यूएशन में पढ़ना चाहिए. Sometimes what can happen on the same article, you can also have some editorial also, if it becomes a very major thing. But I think since it is gone, अब ये आएगा नहीं ज़्यादा इसके ऊपर. But what are the takeaway from this article? अगर हम सिर्फ 5 चीजें देखें, from prelims point of view, from mains point of view. देखो जब भी पढ़ना है एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, what is the question which can come? If you are not going to take care of that, तो फिर मजा नहीं है, फिर पढ़ने का भी फायदा नहीं है. Okay, online students, I hope you are able to understand what we are discussing. Yes, Arjit, that is also correct. Rakesh Asthana, he was also given various extensions. Okay, foreign exchange management, prevention of smuggling. Okay, so tell me, what are the key takeaways? We read one article. It talks about ED. It talks about FATF. Okay. Both of them, they are interlinked with respect to money laundering, terrorist financing, etc. Those are the important aspects of these two bodies. One works at the national level, one works at the international level. This is what they're talking about. Okay. The other issue which can come, it's about government versus judiciary. This is one more theme.
then one could be just about the institutions of India. Okay, so these are the themes which are coming from this newspaper, this thing. Now, just see, I also understand, अब बैठ के आप सारा ये तो notes बनाओगे नहीं, ठीक है, but at least can you make a list? You are not having prelims tomorrow. It's after 10 months, 11 months. So what we should do? We should make a list of these bodies. When you will read this topic specifically for GS3, there you will read it कि यार ये dimension पे question आ सकता है. For right now, just by reading this much, what did we learn about this? That there was some peer review. We are the compliant country. There is a grey list country also nearby. Okay, we learned about that. We learned about ED. We learned one important thing which is affecting the state of our institutions. You can even you can mention this in the exam also, that even Supreme Court passed the reference that how can one officer be given so many extensions, 3 extensions and a tenure of 5 years. You can specifically, I don't have to write the name. Okay, don't have to write the name, and that will be a good example in these institutions. Government versus judiciary. Many time question if it comes from this point of view, the judiciary has helped in protecting the rights of India, as well right of India citizens as well as its institutions. Suppose if this is the kind of question comes, so for institution can we use this example? So we picked up one example, now we'll use it anywhere जहाँ हमारा मन करेगा. We'll learn about the organization so that if in prelims these questions comes, we can handle them. These two are mostly main specific. These two are mostly prelim specific. And what are the provisions with respect to its appointment? You have to understand it. Plus, which body appoints the director of ED? Does it have, what is the composition of that? These kinds of questions can come in your prelims. And when these questions are going to come, if you do not know, अभी ED मिलेगा तो है नहीं आपको लक्ष्मीकांत में, है चैप्टर उस पे, है नहीं है? I have not seen, मतलब मेरे टाइम 5वां 6वां एडमिशन चल रहा था, एडिशन कोई चल रहा था, अभी पता नहीं कौन सा चल रहा है. सो ED पे नहीं मिलेगा आपको उस पे. ओके, तो ED स्पेसिफिक, आई थिंक देयर वाज वन change in the act also 2 to 3 years ago. So at least what I will do, if I want to be a topper, I will just search about ED on internet. Not necessarily today. I'll keep a list with me. But these are the topics which are in list. This topic mostly you will not find in your current affair magazines. The way of using it as an example for it, this you will not find in your magazines. When UPSC is going to evaluate your answer copies, को समझ में आ जाएगा ये इंसान पढ़ रहे हैं. And these are independent people. थोड़ा फायदा देखो होता है इसका, इमेज का गेम है सारा, ठीक है. If you start writing good examples, because what will happen in Lakshmikant, all the examples are very old. All the examples are very old. Like here also we have GS test series, some of the students are writing for this year. So what happens, like if a question comes from tribunals, there is one L. Chandra Kumar case which is given in the Lakshmikant. In this Supreme Court passed some directions. हर कोई वही लिख रहा है. तो भाई आजकल भी तो कोई आई होगी जजमेंट, कुछ तो आया होगा, थोड़ा तो रहम करो अपने. यू हैव टू स्टडी दीज थिंग्स. इफ यू आर नॉट स्टडिंग तो फिर क्या दिक्कत है, आपको मार्क्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे. सम विल गेट 140, यू विल गेट 100. if the topper is at 100, you will get 60. This is how the differentiation comes. So by just reading one topic, इतना कम से कम आपको समझना सीखना पड़ेगा. You don't have to address everything at the go, but list बनाना शुरू कर दो. Make 4 copies. Make 4 copies. GS 1, 2, 3, 4. If any case study comes with respect to governance, etc., ये भी information वहाँ भी use हो जाएगी. At least if they say कि नहीं किसी का tenure पूरा हो गया है, what to do, what not to do, we'll say कोई नहीं, we'll at least ask for extension. जब 3 हो सकती तो हम 1 नहीं मांग सकते क्या?
problem solving approach. Even though it comes with a sense of laughter, but it's a problem solving approach. Somebody says कि नहीं है, तो at least बोल सकते हो ना कि extension can happen in an institution if the requirement is there, if national, public and national interest, that is the keyword for your ethics. Public service values होती है ना, तो वो आपका ethics का case study बन गया. बस ऐसे evaluate करना सीखो, अच्छे से हो जाएगा. All right students, I hope you are able to understand whatever we are discussing. Yes प्रशंसा, that's how it is. अगर आज भी तुमसे लिखवाएंगे ना हम क्वेश्चन इंटीग्रिटी पे, पहला एग्जांपल आएगा अशोक खेम का, बुक्स में वही लिखा है, लिखो फिर नंबर नहीं आएंगे. Why some examples have become so repetitive that it doesn't make much sense. CBI is going to probe this, okay, has asked to take over probe May 4, etc. The government also informed in the affidavit that the trial should be held outside the state and completed within 6 months of filing the charge sheet. Okay, a video of the incident. Meanwhile, violence continued change as one person was killed in gunfight between two groups in this specific area that they have. So, the concept of charge sheet, important for prelims. They are asking such questions: police reforms, judicial reforms, bail, all these kinds of questions are coming. Okay, police custody, judicial custody. See the paper, previous year questions of last 2-3 years. So you should know what is the meaning of charge sheet. कौन file करता है उसको? Okay, when action is taken, and they are saying that it should be completed within 6 months of filing of charge sheet. Okay, can a case pertaining to someone be taken outside the state? It can, if there are some certain kind of circumstances, you can see it. And why is it done? So that proper justice can happen. If you do only in that area, so it will be influenced by the authorities. That is what you can take away. Like suppose if a case study comes, violence is happening, you have to do this investigation, etc., etc. So you can give one of the recommendation in ethics that we can take it outside. You can take outside. ठीक है, उससे आपका दिमाग दिखेगा कि हाँ यार पढ़ रहे हो करंट अफेयर, इनको तो आता है, इनको समझ में आता है, चीजें पकड़ लेते हैं जल्दी जल्दी. बट वही वाली बात है, सीखना जरूरी है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट ऑन मणिपुर, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, फर्स्ट पेज. राज्यसभा passes bill to crack down on piracy. Is sheet sharing enough to unite the opposition? तो ये तो मोस्टली पॉलिटिकल है. ठीक है, तो इससे अपने को ज्यादा लेना देना है नहीं. हमें तो कोई भी आ जाए सर्व ही करना है, हम तो रिलैक्स करेंगे. परमानेंट सिविल सर्वेंट, रिलैक्स करो. इंडिया स्लैम्स चाइना ओवर स्टैपल वीजास. ठीक है, तो ये हमने देखा था, इसके हेडलाइंस पे करा था. लेट अस गो फर्दर. किसी को प्योरीफायर वगैरह लेना हो तो ले सकते हो. Let us go further. Supreme Court allows St. Stephen's Jesus and Mary College to conduct interview for reserved seat. तो ऐसे कोई हमारे काम का है नहीं ऐसे. ठीक है. High Court refuses to order blanket ban on sale of acid. Okay, so you must be knowing कि भाई acid attacks वगैरह चलते हैं. देख पहले तो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही बताते क्या इसका मीन है. Refused to impose on the sale of acid in national capital, saying it could lead to unintended consequences affecting sectors where acid is responsibly and safely utilized. Okay, very good thinking. Ask the state authority to impose strict penalty on those found to be involved in illegal sale or misuse of acid to create a deterrent effect. So mostly it will be about acid throwing cases. Okay, so if suppose if this comes as a case study, so what is observed by the High Court? It is relevant. एसिड यार हम लोग ऐसे ही देखते हैं, बट कितनी चीजें हैं जिनमें एसिड का यूज होता है. अब सपोज कोई आसपास में मेडिसिन प्लांट है, उसको एसिड चाहिए होगा यार. इफ सम
some laboratories are doing experiment, they would require acid. साइंस की ग्रोथ रुक सकती है, मेडिसिन पे इफेक्ट आ सकता है. तो जस्ट कीप ऑन थिंकिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपने लिए नहीं है. Now here, like, disclosure of rape victims identity by Rahul against the law. So just have an understanding which is the specific law which is mentioned in which the identity is not given, and this is given for the protection of the person who gets affected by this. So at least पता होना चाहिए, बस एक rough random. Yamuna hits 206 meter mark as the river's ebb and flow continues. Some question on dams, their heights कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आ सकता है टेक्निकल इन प्रीलिम्स. ठीक है, इंडिया में विच आर द इम्पोर्टेंट डैम्स एक्सेट्रा, रिवर्स वगैरह का उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो उसको बस उस हिसाब से पढ़ लेना. द वाटर लेवल ब्रीज 206 मार्क, ओके, बट केम डाउन टू 0.95, बहुत रहमत. इट इज लाइकली टू कम डाउन फर्दर ऑन फ्राइडे. इवैक्यूएशन इज गोइंग ऑन. इसके ऊपर केस स्टडी हो सकता है specifically. There can be a very good case study made by UPSC on this, because there are multiple factors which are involved is, है ना. जैसे हम क्या, जैसे मान लो अगर if a case study comes on flood, so many people will not think it also leads to scarcity of water. हर कोई ऐसा पानी तो है ही, पी लो भाई. In the provisions, in the suggestion, you will not write water is required because it gets contaminated. It gets contaminated. So वो चीजें आपको ये पढ़ के समझ में आएगी कि what all things are required. Like, so what work is being done by the government? Usually starts evacuating people living in low-lying area when the level reaches 206 meter. So if suppose आपको recommendation देना हो for future, case study came कि भाई flood has come, what recommendation would you provide for the future? So like this, can we have one specific water level? That if water level starts breaching this, then we have to do immediate evacuation. Like in Yamuna floodplain, it is 206 meter. अच्छा example है, इज्जत आएगी एग्जामिनर को तुम्हारे लिए. Because you have to think. If you are not thinking, तो फिर यार ऐसे ही लिख जाओगे, कुछ भी लिखने आओगे. ये भी लिखोगे पानी पिलाना था, ये तो दूर की बात है. Okay, but an official said no fresh evacuation was planned as people are already in relief camps. Earlier this month, many areas were submerged and thousands of people were moved to relief camp. The water level rose to this record high 208, something like this, and has been fluctuating, but it is mostly stayed above the danger mark of 205.33. Around 41,000 people living close to the river are vulnerable and need to be evacuated when the Yamuna hits this mark, according to this. So we have a data. We have a data. Like suppose if question comes on urbanization and you're writing a point on urban flooding, you say just like in Yamuna floodplain, 41,000 people, they get affected whenever there is an incidence of flood where the river reaches above the 206 meter. ऐसा point लिखना next to impossible है. ऐसे आपको मॉडल आंसर में भी नहीं मिलने वाला. बट आपको ये चीजें सीखनी है कि हाउ टू यूज दीज फैक्ट्स, हाउ टू यूज दिस, तभी तो इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में. मेरा ध्यान हमेशा क्वेश्चन की तरफ जा रहा है. आप देख रहे हो ना, बार बार मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं एक भी लाइन विदाउट थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन. दिस इज हाउ यू हैव टू ऑल्सो थिंक. इफ यू जस्ट प्लेन रीडिंग, पढ़ के अगले दिन भूल गए, न्यूज़पेपर गया, कबाड़े वाले को बेचा, चाय पी, फिर न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ये स्टोरी नहीं चलनी चाहिए. Need to record the water level like this. Meanwhile, the BJP continued to वो तो resignation मांगे. Failure in flood management, affiliated members on this. ये किसी काम का नहीं है अपने लिए. ठीक है, ये सब मत लिख देना भाई. ये कोई लोकल केस स्टडी देना हो, लॉ एंड ऑर्डर कभी देना हो, यूज कर सकते हैं. Police forced to act against this. Bihar Energy Minister. High Court fined restaurant bodies 2 lakh in case against service charge ban. Not that. अब हर चीज, छोटी चीज लड़ने का फायदा नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है.
यूपीए चेंज नेम टू हाइड इट, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ईडी एक्शन आ गए ना फिर से ईडी। सो ईडी के क्या क्या केस लेके बैठा हुआ इस टाइम, 4-5 केस स्टडी पकड़ लो। At least you can justify if you say ED takes action only against the rival political parties. Argument doesn't hold any water. You should have examples कि where it is happening. ठीक है? I'm not going to go into this because as such कोई logic नहीं बन रहा ज़्यादा, but यहाँ पे आप देख सकते हो money laundering charges and cash for job scan. We contended that judicial remand, not police custody, is the natural corollary of arrest under the PMLA. है ना, क्या है पीएमएलए? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट. दिस हैज बीन रिफॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स. ओके, एंड दे हैव यूज्ड बोथ दिस वर्ड, पुलिस रिमांड एंड पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल रिमांड. यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना था. सो व्हेनेवर यू सी सम न्यू टर्म, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो फ्यूचर बन सकते हैं. रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, इन पे कभी क्वेश्चन देखा है? बट यू ऑलवेज फाइंड देम इन द न्यूज़पेपर. So terms, understanding of terms, basic clarity, conceptual clarity is very important for all of us. 39 MNC came together for circular, इसको पढ़ सकते हैं. Okay, we can read it because it will provide you some good perspective on environment. पढ़ सकते हैं. So embracing a circular economy model enables transition from the linear take, make, waste. Good term. Definition भी मिल गया. Paradigm and embrace a more sustainable and regenerative approach. Okay. So on the sidelines of G20, this was made. 39 MNC, and from which sectors they came? Steel, FMCG, electronics, etc., etc. To pledge to adopt resource efficiency and circular economy principles. So they said circular economy principles. So what are those principles? What I'll do, I'll just put a name कि भाई ये टॉपिक बाद में जब environment पढ़ना होगा, you have to study this topic. What are those principles? To address environment challenging including rising from waste, plastics, microplastic. UPSC asked a question on microplastics in prelims. ठीक है ना? Chemical waste, the launch of RECEIC. Okay, this is what they're saying. रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री कोएलिशन. तो ये टर्म आपकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन गई, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. यू शुड नो अबाउट इट व्हाइल साइनिंग फाउंडेशनल चार्टर अनवीलिंग दिस लोगो. छोड़ो ये सब. अटेंडेड बाय 7 countries. विच आर दोज कंट्रीज? डेनमार्क, इटली, मॉरिशियस, कनाडा, यूएई एंड यूरोपियन यूनियन. It would be led by industries and government would only play a exact statement like UPSC comes in only. Who will take the main initiative? It will be taken by the industry and government would only play a supportive role. वहां देख के confuse, elimination करना है नहीं करना है, क्या है क्या नहीं. ठीक से पढ़ोगे तो elimination होते हैं, नहीं तो तुम eliminate हो गया. Speaking about India's effort to mitigate the burden of plastic waste, he said about 41 lakh tons of plastic waste were generated in the country in 21-22, of which 30 lakh tons, okay, were allocated to 2000 old registered recyclers in this. So this data is important. एक बार याद कर लो, एक बार तो याद करना पड़ेगा कि how much plastic waste is there and how much of it is getting recycled. एक बार एक डेटा याद कर लो. जब तक आपके 2-3 अटेम्प्ट चल रहे हैं, 2-3 साल आराम से एक ही डेटा चल जाएगा, लेकिन एक बार याद करना पड़ेगा टॉपिक वाइज. ओके, सो I'll just remember this. We have 41 lakh tons of plastic waste in 21-22, of which is 30 lakh ton. So it means 11 lakh ton तो रह गया. Okay, under EPR. Now please remember this is a term which can easily come in the prelims. What is this EPR? Guidelines established through plastic waste management. 2.6 million tons worth of EPR certificate has been generated by processors and around 1.151 million tons of those certificated has been purchased by purchaser, important brand owners. देखो
specific provisions, what is the meaning of this and that. It can easily come in your prelims as well as your paper 3. छोटा सा आर्टिकल है बट इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं. इफ आई एम राइटिंग एन एसे, इफ आई एम राइटिंग ए कंक्लूजन, इफ आई कमिंग अप विद द विजन, व्हाट आई वुड से दैट इंडिया शुड मूव टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी. Okay, the ECSW which will conclude with the meeting, note this. अब ये स्पेसिफिक याद करना पड़ेगा आपको. ECS, this one, ठीक है, which all are involved in this. So this article somehow becomes more important for prelims because of the terms. We see one term of circular economy. I see one more term of EPR certificate. When I see this PIBOs, how they function, ECSWG. Okay, so these are the terms which I see in this article, and this article somehow becomes more important from prelims point of view. And from main point of view, I can only get the data of plastic waste, how much it's generated. If this data comes in prelims, so I can eliminate there also, or if it is correct or approx clean mark. Please try to understand that these kinds of terms will be asked by UPSC. इसको देखो इन जनरली छोड़ सकते हैं बीच में. हमारा फोकस कहाँ आना चाहिए? Editorials. And if we see, just let's first see editorials. First one, the government must transparently lay out the state of relation with China. So do you think this kind of question will come? Think what kind of question can come? Arjit, carbon footprint is about how much carbon eventually carbon emissions are coming when some activity is taking place. Okay, तो वो उसके स्पेसिफिक जितने भी टॉपिक्स हैं यार, कोई एक तो बुक पकड़ सकते हैं हम, कोई भी एक इंस्टीट्यूट की बुक ले लो, और साथ में जब न्यूज़पेपर्स में आता रहेगा तो उसको अपडेट करते रहो. डेटा कैन बी अपडेटेड, कंसेप्ट कैन बी अपडेटेड, तो वो धीरे धीरे चलता रहेगा. इफ वी सी चाइना, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम? बहुत मुश्किल है. मतलब दैट विल बी डायरेक्टली आस्किंग द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट. Honestly, I hope all of you are following me. बीच में हो गया मेरा आज का न्यूज़पेपर. Yes, what is the term at the top? Elusive consensus. I used to make small notes of such terms because मेरी भी अंग्रेजी को ज़्यादा अच्छी नहीं है. तो what I used to do, इसको रट लिया, इसको फिर यूज़ किया हर जगह. पेपर 2, essay, कुछ लगेंगे that the consensus could not be made. This is a case of elusive consensus. सिर्फ यूज करना सीखना है, रट्टाफिकेशन ऐसे ही करना पड़ता है, जरूरी है. इफ यू विश टू रिफॉर्म योर लैंग्वेज अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर, ओके, तो ऐसे करो. बहुत अच्छा वर्ड है, इलूसिव कंसेंसस. ओके, और सपोज इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट इंडिया चाइना रिलेशनशिप, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इंडिया चाइना रिलेशनशिप आर मार्क्ड बाय ट्रस्ट डेफिसिट. सबने सुना होगा ये वर्ड, आर मार्क्ड बाय ट्रस्ट डेफिसिट, एंड दिस ऑफन लीड्स टू elusive consensus. आंसर राइटिंग में देखो फ्लो ढूंढना पड़ेगा, सामने वाले को मजा आना चाहिए, मतलब हाँ ठीक है, अच्छा लिखा अच्छा लिखा. फ्यू थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रॉम योर फाउंडेशन कोर्स, जो आपका जीएस आप जहाँ भी कर रहे हो वहाँ का बेसिक लेवल मटेरियल यहाँ पे यूज हो जाएगा. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं लिखोगी जो आप पेपर में लिख भी पाओगे, फ्रेंकली स्पीकिंग. So mostly on IR article, I used to avoid making notes. What I used to do, I used to find keywords. सिर्फ keywords find करते हैं इसमें से, because themes are not going to change, है ना? अटल बिहारी जी, he said that you can choose your friends, but you cannot choose your
नेबर्स, तो ये तो रहेगा ही हमारे साथ में। और इश्यूज आप सबको पता है, इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन्फ्लुएंसिंग आवर नेबरहुड, है ना। कौन कौन सा इनके इनिशिएटिव? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो यार, सारी चीजें इस आर्टिकल में नहीं होने वाली हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड नोट्स फॉर योर IR. What you can do, you can only add few lines from here. You cannot make notes of this independently. It will not be useful 100% from exam point of view. और ऐसा प्रीलिम्स में भी नहीं पूछेंगे जो इन्होंने लिखा है, लेकिन चलो देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। The government must transparently lay out the state of relations with China. आप ऐसा कभी भी एज अ ब्यूरोक्रेट कभी नहीं बोल सकते, बिकॉज आप ही हो, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? आप ये लिखोगे लास्ट में कंक्लूजन में, क्या होगा उससे? ये यूज ही नहीं कर सकते हम ये लाइन। India and China have once again appeared to walk away from their latest high-level engagement with sharply different diagnoses of what ails their relation. Okay, during a meeting earlier this week in Johannesburg between National Security Advisor Ajit Doval and top Chinese diplomat and Politburo member पता नहीं क्या है, Wang Yi. Okay, कहानी है, चलो उसकी जरूरत नहीं है। Highlighted India's concern about line of actual control, तो कुछ भी नया इश्यू मिला नहीं है, ये तो मैं वैसे भी पता था। China's action, he said, that had eroded the public and political basis of ties. So we can use this one, right? India है, इंडिया को तो डिफेंड करेंगे ही ना। But China's actions have eroded the public and political basis of ties. Okay. He also stressed that need to restore peace and tranquility in the world so as to remove impediment to normalcy in bilateral relations. So, can you suggestions we can write all this? If a question comes on India-China relationships, सारे इश्यूज तो यहाँ आपको मिलेंगे नहीं, यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है नंबर 1 अभी लेटेस्ट मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो करंट अफेयर में बस उतना इंपॉर्टेंट, इट इज इन जोहान्सबर्ग, सो इन साउथ अफ्रीका, इट इज देयर। ओके, एंड सेकंड, कोई बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है मिला मुझे अभी तक। लेट अस सी फर्दर। द चाइनीज रीडआउट इन कॉन्ट्रास्ट एम्फसाइज द बिग पिक्चर कॉलिंग फॉर द अर्ली रिटर्न ऑफ टाइज टू ट्रैक ऑफ हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट। इट ऑल्सो कॉल्ड ऑन how both sides to follow an important consensus that is reached by these two last year. So last year they met in Bali, okay, and with this claimed Bali consensus. So Bali consensus becomes a keyword for us. Why? जब conclusion करना होगा तो बुरे नोट पे तो करोगे नहीं. What will you write in the conclusion on India-China relationship? That even though it is marked by trust deficit, but the recent initiatives of Bali consensus as well as the meeting between the National Security Advisor of India and China has said that that consensus can be built in the very near future and normalcy can come in the ties. So these words becomes very important for us, not the material. The Ministry of External Affairs we said that only exchange courtesies has subsequently considered that need to say कुछ नहीं है. Whether or not the leader exchanged more than the pleasantry, the contrasting claims from the latest have only reinforced the need for the Modi government to more transparently lay out state of relations, not useful. Opacity and defensiveness have marked the government's responses since tension began in April 20 to any questions about the border or its border approach to China, which appears increasingly rife with contradictions. Only this week, Minister of State for Electronics Rajiv Chandrasekhar told a British newspaper that government welcomed investment from China. Trade with China boomed to record level. This again comes one more important thing for us, that our trade is at the highest level. So that becomes a positive in the international relationship. But the negative is the trade deficit for India. China doesn't provide us market access, and as a result of this, we are not able to sell our produce in there. While the same government has banned more than now this will show you what has happened in the ties recently. So government has banned more than 200 Chinese apps including TikTok. Meanwhile, after 18 round of talk, there remains little clarity on the LSE situation. So on LSE, we can remember how many rounds of talks has happened? 18 rounds. So that is a factual thing. And the continued ingress by China in Demchok and Depsan. These are the two areas where are the friction point. You can make a map and find them out. Where we have these specific areas, okay. While the arrangement to set up buffer zones in 5 other points are to welcome, the terms and arrangement withdrawal by both sides also remain shrouded in secrecy, as both sides
continue to find a way to stabilize ties and restore. The public should be kept informed. Relationship with India's biggest neighbor are far too important to be conducted in the shadows. Can you see the way in which the Hindu is writing the article? कौन पूछेगा जाके? आप लिख सकते हो आंसर ये कि don't keep secrecy, tell us more, UPSC is asking questions. For us, it's always better to have a middle viewpoint. What is important for us from this whole article? Like if we see one aggressive step from China, that it is encroaching in two specific areas of Ladakh. Okay, this is what is important for us. If we see from Indian point of view, we have banned more than 200 Chinese apps. अब जबरदस्ती इंक्लूडिंग टिकटॉक लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं तो वही चलाता था, जब वो बंद हुई तो मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू. एनीवे, सो दैट वी आर एबल टू. तो हमें यही देखना है व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, व्हाट आर द नेगेटिव्स, व्हाट आर द पॉजिटिव्स. बट डू यू थिंक यू कैन राइट एन आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दिस? यू कैन नॉट राइट यार. इट हैज नॉट डिस्कस द चाइना पाकिस्तान नेक्सस, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, OBOR, वो कुछ डिस्कस ही नहीं किया हुआ इसमें. तो दिस आर्टिकल ऑन इटसेल्फ is does not having the potential to teach you any specific about China. तो ऐसे आर्टिकल्स में जल्दी से रीड आउट मारो, बस निकालो कहाँ मीट हुई. बाली में मिले थे, बाली कंसेंसस मिल गया आपको एक वर्ड. लेटेस्ट मीटिंग हैज हैपेंड इन जोहान्सबर्ग, 18 राउंड ऑफ टॉक ऑन LAC. तो और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रट्टा मार लो बस, इलूसिव कंसेंसस, दैट्स इट. तो इसमें क्या क्या नोट्स बनाओगे? इंडिया चाइना लिख के 3-4 वर्ड लिखा, 2 डेटा लिखा, खत्म किया आपने लिए. इट इजी फॉर आवरसेल्फ. इंडिया चाइना के नोट्स इससे नहीं बन पाएंगे. एंड बेटर वुड बी आप अपने कोचिंग वाला नोट्स रखो फॉर IR, उसके ऊपर थोड़ा सा बस ऐड करते रहो. आप में से मेनी ऑफ यू मस्ट हैव फिनिश योर फाउंडेशन और यू डूइंग फाउंडेशन, तो आपको इतना तो पढ़ाएंगे ही ना कि व्हाट इज द सोर पॉइंट्स इन द रिलेशनशिप. सोर पॉइंट बड़ा आसान है. वी हैव टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट, we have economic problems because India is having a very large trade deficit. Third, it's about China-Pakistan nexus, which leads to problem of terrorism towards the eastern front. Their engagement in Myanmar. There we have which specific thing? Golden triangle, crescent आपका ईरान साइड होता है, तो वहाँ illegal weapons, drugs उसका इश्यू चलता है. Circling India, ठीक है, सर्कलिंग इंडिया बाय OBOR इनिशिएटिव. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, UPSC asked a question on string of pearls 2013. These are the issues. और ये मुझे आज भी क्यों पता है? क्योंकि ये चेंज ही नहीं होते. एक और राउंड ऑफ टॉक्स हो जाएगा बस, कुछ चेंज होना होगा. नया चीज क्या है? इंडिया ने टिकटॉक बैन कर दिया और वी हैव बैन्ड मोर देन 200. और बट जब हम लिखेंगे तब हम ये नहीं लिखेंगे कि we have banned this much. India has banned because of the issue of internal security. गवर्नमेंट का स्टैंड आना चाहिए. द हिंदू नहीं लिखेगा. समझ में आ रही है चीजें? What I am trying to tell you, when you write answers, don't pick up as it is line from the Hindu, because the Hindu थोड़ा सा critical रहता है. तमिलनाडु based, तमिलनाडु ED, ठीक है. तो देर इज अ प्रॉब्लम, एंड एज ए सिविल सर्वेंट वी कैन नॉट राइट दीज लाइन एज इट इज. हमें उसके पीछे का पर्सपेक्टिव भी जानना जरूरी है. एंड इफ वी आर बैनिंग, इट इज ऑफ बिकॉज ऑफ 2 रीजन. 1, इंटरनल सिक्योरिटी, और बेस्ट वुड बी फॉर इंडिया साइबर सिक्योरिटी. सेकेंड, डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन. होल डेटा, होल पॉपुलेशन डेटा इज गोइंग टू चाइना. डेटा इज द न्यू ऑयल. You have to connect many things. I hope the article is clear to all of you. What is the relevance of an article of IR? You have to see through this. You can never get a complete understanding of topic. इसके लिए आपको मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे. अगर आपके कोचिंग के नोट्स हैं या फिर कोई मैगजीन आप पढ़ रहे हो, इट इलेबोरेट्स द इंडिया चाइना रिलेशनशिप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा देन जस्ट बेसिंग योरसेल्फ ऑन दिस. सो ऐसे आर्टिकल पे आई विल नॉट वेस्ट मोर देन 2 to 3 minutes. What I will do, I'll pick up the points which are important for me, positive, negative,
व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इफ आई हैव टू सी फ्रॉम इट। जबरदस्ती मुझे गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं करने, यू डोंट, दिस इज नॉट एन एक्टिविस्ट एग्जाम, है ना, कि मोदी बता क्या है रिलेशन में क्या छिपाया है, कहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे छोड़ना होगा यार, हम पॉलिटिकल लीडर छोड़ना है, वी आर मोर सिविलाइज्ड, वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। हाँ, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है इन द आंसर्स। इवन इफ वट एवर यू राइटिंग, लाइक सपोज दे आर नॉट राइटिंग स्पेसिफिकली कि भाई व्हाई दिस वाज डन, व्हाई 200, तो यू हैव टू शो इंडियन पर्सपेक्टिव यार, दैट देयर वाज अ पर्सपेक्टिव व्हाई दे वर बेंट, और बैन होना भी चाहिए। नहीं, कुछ कुछ एप्स हैं ऐसी, मतलब दे मे बी टारगेटिंग। आपने भी न्यूज में देखा है, देयर वर सम चाइनीज लोन एप्स, दे यूज्ड टू गिव वेरी इजी लोन्स टू द स्टूडेंट्स, and then they used to come up with various kinds of measures to torture them, and some of them have committed suicide. तो क्या गलत किया गवर्नमेंट ने, सही किया यार, आपको वहां लिंक भी करना चाहिए था। दो करंट अफेयर्स बहुत अलग अलग है, बट इस एग्जांपल को यहां ले आया है, एज कैन बी सीन फ्रॉम द रीसेंट लोन एप्स फ्रॉम चाइना। ओके, तो चीजें ऐसे ही अपने आराम से समझो, एक एक करके। एक दिन में बादशाह नहीं बनोगे आईआर के, एक दिन में इफ यू फील लाइक कि भैया होल करंट अफेयर विल बी डन, इट इज नॉट हैपनिंग। द टाइम दैट आई एम टेकिंग ऑन एवरी आर्टिकल, आई विल नॉट टेक इट व्हेन आई एम रीडिंग अलोन। ये सब मेरे दिमाग में प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक डिफॉल्ट होती है। आपके लिए क्या है कि आपको ये चीज सीखनी है, और ये चीज करने के लिए आपको 2-3-4 महीने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। By whenever you see any article, see what kind of question can come in prelims, what kind of question can come in mains. Okay, see the relevance of the subjects also, कि in which subject what is going to help. Like in IR, I have told you categorically, don't make big notes, just get some important keywords. Second, at the max, facts, and last would be the way forward. And at the same time, all of you should be aware that those things which are not to be written, like in this there are many things which are not to be written in the exam, जो हमें नहीं लिखनी है। तो एक्टिविस्ट नहीं बनना है, चुपचाप ऐसी चीजें पूछो जिनका कोई सवाल आंसर मिले आपको, ठीक है, उसके अंदर मत घुसो कि किसकी क्या आइडियोलॉजी है। लेट अस सी नाउ दिस आर्टिकल, weighing in on the National Research Foundation Bill. Prashancha, I will tell you at the end of the session. Okay, let us just see this article. This article is on National Research Foundation Bill. कितना पैसा खर्च करते हैं हम रिसर्च पे? हाउ मच? 2%। बताओ, आई एम स्टिल वेटिंग। नहीं, 20,000 को एनुअल ग्रांट देंगे, कुछ भी पढ़ के सामने से डेटा नहीं बन जाएगा आगे भी पढ़ लो ना, एनुअल ग्रांट ऑफ दिस मच। कुछ डेटा आपके पास स्पेसिफिकली होना चाहिए बिफोर रीडिंग एनी आर्टिकल। या पढ़ रहे हो तो कम से कम अपना फैक्ट्स लिखो कि ओके, आई हैव टू गेट दिस फैक्ट, बिकॉज व्हेन यू राइट आंसर्स, सारे फैक्ट एक आर्टिकल में नहीं मिलेंगे। सो इफ यू हैव सम नॉलेज अबाउट दिस, इट विल बी बेटर, कि वो 1% के भी कम है। हाँ, मतलब 1% से भी कम है, मुझे इतना याद है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है। 0.65 कोई ट्रॉफी नहीं देगा आपको, बस अपने लिए इतना, इट इज इवन लेस देन 1% ऑफ जीडीपी, खत्म। किसी भी चीज का जब रेलिवेंस है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, व्हाई आर वी कमिंग अप विद दिस बिल, व्हाई दिस फाउंडेशन? बिकॉज इंडिया में जुगाड़ ही चल रहा है बहुत दिनों से। डू यू थिंक वी कैन बिकम द मोस्ट पावरफुल नेशन लाइक दिस? नेवर। See the expenditure done by USA, China. When somebody says 0.65% of GDP, उससे भी मजा नहीं आ रहा है, आपको उसको कंपैरेटिवली लेके आना पड़ेगा with USA and that way
चाइना। जितना हम खर्च करते हैं उतना तो गूगल सर्च कर देता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। हाँ, मतलब अगर हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक कंपनी की ज्यादा एक्सपेंडिचर है, लालच होनी चाहिए ऐसे। समझ रहे हो इस चीज को? लेट अस सी। द साइंटिफिक कम्युनिटी इन इंडिया इज abuzz with curiosity and excitement after Union Cabinet's approval of this bill to strengthen the research ecosystem in the country. Your introduction is ready. Your introduction is ready. This bill has been cleared by, for what purpose? Strengthen the research ecosystem in the country. Whenever you have to write answers, research को बस हटाते जाओ. To strengthen this ecosystem, to strengthen this ecosystem, like this, your introductions can be ready-made. फिलर की तरह यूज करो, बहुत जगह यही है. हमेशा कोई भी बिल आता है, प्लीज रिमेंबर द विजन ऑफ दैट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नॉट रिमेंबरिंग द विजन, आंसर में लिख नहीं पाओगे. लाइक सपोज इफ समबडी सेज कि भाई व्हाट इज द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन, क्या विजन है? To transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. 2015 के आसपास 16 के रट्टा मारा था मैंने, ऐसे ही मारा था, उसमें आया हुआ था to transform India into digitally empowered society and knowledge economy. अब इसको मैं कहीं भी यूज कर लेता था, कहीं भी मुझे लगता कि यार रिसर्च है, हाँ डिजिटल से रिलेटेड है, हाँ तो कंक्लूजन में डाल दिया, कहीं इंट्रोडक्शन में डाल दिया, एज पर द विजन ऑफ द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये सब नहीं लिखता था, बट digitally empowered society and knowledge economy. That's why whenever you read this, आपके लिए ये बहुत important है, because many of you will get stuck when you write the introductions, right? होता है ना ये दिक्कत, तो वहां पे ये करना है, ठीक है? The bill is to be introduced in Parliament. Once passed, this ये तो सिर्फ normal चीजें हैं. So what it will do? Foster a culture of innovation, nurture a research ecosystem across all university colleges in the country. Whenever in GSP generate points, what will be the positive of this? So these are the positives. Simultaneously, the bill seeks to repeal this under SCRB or established to carry out almost it. So if from prelims point of view, from mains point of view, this doesn't make sense. This इसको याद करके कुछ मिलने वाला है नहीं. But from prelims point of view, it is important which specific bill or body it's going to replace, and वो किसके अंडर काम करती है. Because in prelims में you may have seen questions that this institution works under which ministry, which department. These kinds of question comes regularly. So that information I'm getting here. The final point, the idea of establishing this as independent to promote and fund research was mooted by which committee? Kasturi Ranjan Committee in 2019 and adopted in the National Education Policy of 2020. So this can also be used in your introduction. This can be also used, okay? ये भी अच्छा है उसके लिए. Importantly, both document mentioned in no uncertain currently funding research this in सबको they need independently. The list of existing institution funding did not separately mention the SCRB, but there was no indication in the policy department that it would abolish or subsume into the NRF. Therefore, the scientific community had assumed that as a statutory body of DST continue to support and fund. तो ये कुछ इतना आया था. देखो क्या होता है ना, normally if there is a controversial bill, UPSC में उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? If there is a very normal kind of bill, तो वो उस पर मोस्टली क्वेश्चन तब तक नहीं आता है unless it becomes a act. And here many of the things that he is writing, okay, they are assumptions. ठीक है? अब जैसे ये पूरा पैराग्राफ जो इन्होंने एक assumption की तरह लिया है, अब ये आपके एग्जाम में ऐसे आएगा नहीं. एग्जाम में can you think on the basis of assumption they will ask? Otherwise they will just ask what is the relevance of this bill. They will not ask this specific. तो ये पार्ट काम का नहीं है हमारे लिए. To lend credence to the idea, it highlighted that the leading research producing nation had multiple public and private funding agencies. Further, there was no reason that India could not stand to benefit from the practice. The idea of having multiple research funding agency has further reinforced by the statement that NRF would continue with other funding agencies. So, one idea which is coming critically is the multiple
agencies should do funding. Whenever there is one agency, it leads to problems. या तो उसको टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, उसका अपना कुछ फेवरेटिज्म होता है, दैट इज द प्रॉब्लम. ओके. Highlighting the lack of conducive research, the NRF would get annual grant of roughly 20,000 crores. That is roughly 0.1% of GDP. So roughly this is what was recommended by the Categorisation committee. It did not say how long this grant would be continued, but it did note that research spending in India was a meager 0.6% of GDP compared to 2.1% in China, 2.8% in USA, Israel and South Korea, more than 4%. So when you get such kind of data, quickly change it. यहाँ इंडिया को लेके आओ. ठीक है, राइट 0.65%. USA is around 2.8. So if I get a question on this, मेरे पास बढ़िया बन गया है. इतना लिखने से अच्छा है इसको ऐसे हमने दिखा दिया, एक जगह साइड में रहेगा. ठीक है, और यहां पे लिख देंगे एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, रिसर्च एक्सपेंडिचर as a percentage of GDP. So whenever you get this comparative data, convert them into some form of either chart or diagram, या फिर आपका ऐसे टेबल वगैरह भी बना सकते हो. This is going to help you out whenever you read newspaper. नहीं तो देखो अब इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज का है 4.2, 4.3, 2.1, this, तो बड़ा दिक्कत मत हो जाएगा. और मैंने क्यों 2.1 नहीं लिया? दिखाना तो कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे ना, तभी तो बेइज्जती होगी, तभी तो काम करोगे. और कितना डेटा याद कर लोगे यार? अपने कितने गया है? इंडिया, यूएसए एंड इजराइल. इंडिया, यूएसए एंड इजराइल. 0.65 भी हटा दो, 0.6%, रफली नियर 3%, नियर 4%. Simplify the data for your own convenience. Nobody is going to deduct marks for that. That is 100%. But once you write this, और कोई उसमें सिर्फ और याद भी नहीं रख पाओगे उतना, that is a relative possibility also. So change it into this. Against this backdrop, even those who were pessimistic has felt that the proposed annual grant would continue until this. अब देखो वही फिर चल रहा है. NEP के ऊपर बात आ रहा है. Adopted the idea but without any specific financial commitment. So if a question comes on national education policy, do we find some limitations of that policy? Specific financial उसने outlay नहीं बताया हुआ है. ठीक है. And in the meantime, the public and private expenditure on research and development taken together kept sliding to touch 0.64 in 2021 compared to 0.76 in 11-12. तो अगर अपने को ये भी बनाना है, इंडिया क्या कर रहा है? सिर्फ हम बनाएंगे 0.75 के आसपास, फर्दर गोइंग टूवर्ड्स दिस इज कंपैरेटिव स्टडी इफ यू विश टू मेक इट. ठीक है, तो डेटा को अपने हिसाब से चेंज करना सीखो. व्हाट विल हैपन, यू विल मेक नोट्स, भूल जाओगे बाद में. एक बार डायग्राम बनाया हमेशा याद रहता है. ओके, तो अपने हिसाब से इसको चेंज करना सीखो. PIB रिलीज सजेस्ट दैट NRF will have 10,000 crore for this. तो इस वाले आर्टिकल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, अभी चीजें क्लियर ही नहीं है. So whatever we are reading, it is more or less hypothetical. ये होगा शायद, वो होगा, ये होगा. बस थोड़ा रुक के आर्टिकल छाप लेते यार, हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं. बट व्हाट कैन वी गेट फ्रॉम दिस, फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू? We know how much expenditure is being done on the research, number one. Second, which committee has specifically
recommended it. Third, we are able to get, we have multiple funding agencies will have that. Okay, we get to know about it, which institution may get replaced. बट बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इसके अंदर, और इतना ज्यादा डेटा भर दिया ना विच इज ऑफ नो यूज. हमारे लिए सिर्फ काम का दो ही डेटा है. वन, इंडिया इन कंपैरिजन विद द अदर कंट्रीज, एंड सेकंड आवर ओन ट्रांजिशन. अभी हर जगह करोड़ करोड़ हजार हजार करोड़ बहुत बड़े लगते हैं, कुछ है नहीं अपने पास उतना. इनको $1 बिलियन में चेंज कर दिया करो अगर ये याद नहीं रहता इतने जीरो. तो आज की डेट में $1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड करोड़? 8,000 करोड़ के आसपास हो गया. तो अगर वो 20 है तो सीधा लिख दो $2.5 बिलियन. इजी टू रिमेंबर. ये तो बाद में 1 जीरो नीचे कर दोगे, 1 जीरो ऊपर कर दोगे, इतना दे के 1-2% मुझे दे दो, मैं वैसी पढ़ाई छोड़ के चला जाऊंगा सबसे. सो दिमाग में याद नहीं रहता. मेक डेटा रिलेटिवली इजी फॉर योरसेल्फ. डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग. लाइक हियर दे हैव गिवन 5-6 कंट्रीज, तो भी मैं 3 ही कंट्रीज का याद रखता. यू नो व्हाई? एक, रिमेंबरिंग इट वुड बी इजी. सेकंड, इन एग्जाम यू हैव वेरी लेस टाइम. आप पेपर की मेन थीम छोड़ के डब्बे बनाने में लगे हो, 1-2 उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा चलता रहेगा. वो तो 5-6 कंट्रीज का बना दिया, क्या मिला उससे? एक्सपेंडिचर बढ़ गया, वो अभी भी उतना ही है 0.65. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू? जस्ट शो द कॉन्ट्रास्ट. वी, यूएसए एंड देन इजराइल, मोर देन इनफ. कंपैरेटिव इंडिया इन यूपीए गवर्नमेंट, इंडिया इन एनडीए, खत्म. यूपीए एनडीए लिखने की जरूरत नहीं है, ईयर वाइज याद कर लो. 2011-12 यहां पे कुछ इन्होंने बताया स्पेसिफिक, तो वो देख लेते हैं. द क्रिटिकलिटी ऑफ साइंस रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनहांसिंग फंडिंग फॉर दिस as amply highlighted by the new education policy. It insists that economic prosperity of many developed countries now in the ancient world can be attributed to intellectual capital. Keyword intellectual capital, very important, and to their fundamental contribution to new knowledge in science, art and culture. It cites India, Mesopotamia, Egypt and Greece as example. NEP argues that a robust research ecosystem acquires greater importance now due to growing challenges in the world and opportunities. The policy asserts that India has a long tradition of research and this creation, this part is important for essay. Why important for essay? It talks about some historical past. It has some very important keywords and it connects it with new education policy. Education has remained an important topic for your essay preparation. 2016 they asked the destiny of the nation, they are decided in the classrooms. एकदम से देखो इधर, अच्छा इसी में ऐसे क्लासरूम्स थोड़े अच्छे होने चाहिए. बट इट कम्स, वहां पे हम इसको यूज कर लेते. तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर, यार मेरा पर्सपेक्टिव क्लियर रहता था. यहाँ से मेरे को प्रीलिम्स का फायदा मिलेगा, यहाँ से मुझे मेंस का. ये पूरा जो आर्टिकल है बहुत एम्बिगुअस है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं बनने वाला है सच. यहाँ से ये मुझे एरिया, हमेशा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे ध्यान दो, बिकॉज दिस विल इम्प्रूव योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑल्सो. Among my friends, I used to write the best type of introduction and conclusion. और ये मेरी हैबिट पड़ी ही इससे. मैं आप लोगों के सामने क्यों 3-4 इंट्रोडक्शन बना देता हूँ जल्दी से हिस्ट्री में. कैसे बना वो चीज? हैबिट से बना ना. न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अच्छा एक टॉपिक अगर रिसर्च पे आ गया तो क्या इंट्रोडक्शन होगा बता दो. तो जब हैबिट ही आ गई तो आसान हो गया ना आपके लिए. अच्छी हैबिट्स भी तो कर सकते हैं, बुरी हैबिट्स भी तो बहुत है हम लोगों में. एक अच्छी हैबिट होगी ना, अगर न्यूज़पेपर पढ़े, अगर हमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन करना आ जाए ऑन वेरियस वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, तो इट विल इंप्रूव योर मार्क्स स्पेसिफिकली. ठीक है, लेट अस सी 1 or 2 टॉपिक, देन दैट विल बी डन फॉर द डे. द हॉर्नेस नेस्ट इन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल. नाउ फॉरेस्ट एक्ट रिमेन्स इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 3. ठीक है, दिस रिमेन्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो सबसे ज्यादा बेकार क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एनवायरमेंट, है ना. कौन सी बी क्या कर रही है, कौन सा उल्टा नाचता है, कोई सीधा नाचता है. These kinds of questions are coming in the prelims. Okay, but anyhow, this is how ये एक पढ़ लिया. And because this bill has already been passed, okay, with no substantial changes from this, ignoring strong personal public objection that highlighted a number of concerns. So here you can remember a question can come on this: provisions, limitations and the way forward. That's it. That's how you dissect this.
Like here they must have mentioned, the bill will significantly restrict the application of landmark Govardhan 1 judgment of 96, which had extended the scope of this to the dictionary meaning of forest. So it means even Supreme Court has entered this arena. ठीक है, तो ये आपका एक इन्होंने एक फर्स्ट लिमिटेशन है. सेकंड लिमिटेशन हैज बीन पास्ड इज अबाउट it excludes some of India's most fragile ecosystem and removes the need for forest clearance for security related infrastructure up to 100 kilometer of international borders. ये खुद नहीं जाते होंगे वहां पे, बट इनको बॉर्डर के आसपास का हो जाए. The bill introduces exemption for construction projects, zoo, safari, etc. etc. This created, तो इसका कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है. Then he has mentioned specifically about disenfranchising forest people, means it's about scheduled tribes. So what will happen to them? As all of you know, there is one very famous act, Forest Right Act of 2006. So that has been linked, and instead the exclusion and ease of diversion will mean that people's institution no longer need to be consulted. So it will have a bearing on that also. Exclusion that raise eyebrow. Okay. So in this article, the problem is we only mostly see the limitations. Positives कहाँ भाई? फिर वही activist वाला issue आ गया. We have to see that part. कि कौन सा specific चीज इसमें missing है. Because if a question is going to come, can you write an answer only on the basis of this? Again a limitation will come. So अगर notes बनाना भी है इस topic का, बनाने का मन भी है, तो सिर्फ इसमें से 2-3 limitations निकाल लो. पूरे sentences मत copy paste करो, they are not required. हमारे ये तो किसी को भी समझ में आ गया इतनी देर में. कितना टाइम लगा इस आर्टिकल को पढ़ने में? हार्डली 2 मिनट. क्या क्या हमने लिमिटेशन निकाली? First is the definition of forest itself. It has been changed from the previous judgment of Supreme Court. Second, 100 kilometer from the border area, है ना? There the various clearances etc. has been reduced. Third, वेरियस एग्जाम्पशंस वगैरह के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बना दिया, टूरिज्म वगैरह के लिए, उस चीज के लिए. थर्ड, फोर्थ इज विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्ड ट्राइब, दैट इन देयर ओन एरिया दे विल नॉट बी, देयर इंस्टीट्यूशंस आर नॉट गोइंग टू गो फॉर द क्लियरेंस. तो मिल गए हमें 4 पॉइंट्स. इतना ही इसका काम है. इस पे और ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब ही नहीं है. बट दिस टॉपिक्स नोट्स आर नॉट कंप्लीट. व्हाई? वी नीड पॉजिटिव्स आल्सो. And then we need suggestions for the future also, what should be done. Then the topic will be clear, and few provisions of this act will be required for your prelims preparation. तो वो आप जब prelims के लिए पढ़ोगे तो ये act आपको पढ़ना, because it has been amended recently. अब यहाँ पे ये fractured mandate, Spanish voter have placed their faith in mainstream parties etc. अब स्पेन तो हमने जाना नहीं है, जाना है, ठीक है, जाना नहीं जाना कोई फर्क नहीं पड़ता. I will only remember the fractured मैंडेट. ओके, जब भी कोई क्वेश्चन आए विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल इलेक्शन सिस्टम, इट वुड बी योर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. व्हेनेवर वी हैव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वी हैव फ्रैक्चर्ड मैंडेट. इन इंडिया इफ वी सी, दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. इफ ए क्वेश्चन कम्स इन पॉलिटी, बट पढ़ भी लेना अंदर कि इनका है भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या नहीं है. मैं तो बस ऐसे बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से. तो व्हाट आई विल डू, that if India had gone for this, it could have had a fractured mandate, as can be seen recently election in Spain. Example को use किया, connect किया with paper to finish. मेरा काम इतना ही है भाई तुमसे. I am leaving you out. बाकी आप देख लेना अपना जो भी है. देखो, बार्सिलोना को रहना है वहाँ पे, स्पेन में छोड़ना है, वो तुम्हारे ऊपर है. ठीक है, क्योंकि वो सब हमारे काम की नहीं है. It's not going to help us anyway. ये है देखो, which I was talking about. देखा तो होगा ही न्यूज़पेपर, बट इसको देखते अरे ये सब तो ऐसे ही. Letters to the editors. This is what I was talking about. Like breaking the silence के ऊपर ही आया फॉलो अप. तो पहले पढ़ा भी तो होना चाहिए वो आर्टिकल, तभी तो ब्रेक करोगे साइलेंस को. खुद ही साइलेंट है हम. The media is replete with happening in the state of Manipur. The whole country is aware of the sad state of affairs. Hope that this तो ये कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है. स्विच दम ऑफ, यूनेस्को के ऊपर कोई आया है. तो कभी कभार यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ चीज़ आ जाती है, और इनके बीच में द हिंदू अपना कुछ छुपा के लिख भी देता है, करेक्शन एंड क्लैरिफिकेशन. दिस इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. सो वंस व्हाट हैपेंड, राज ठाकरे's इंटरव्यू वाज गोइंग ऑन. राज ठाकरे, ऑल ऑफ यू नो, very blunt person,
टू द पॉइंट, इज्जत से बात करने का, इधर उधर की बकवास नहीं करनी है उनसे। तो राज ठाकरे का इंटरव्यू चल रहा था, तो ही आस्क्ड द क्वेश्चन कि व्हेनेवर समथिंग रॉन्ग हैपेंस फ्रॉम अस, कहाँ पे छापते हो आप लोग? फर्स्ट पेज पे। और जब आपसे होता तो कहाँ छापते हो? अब वो सामने से कह रहा भाई क्या क्या बोलूं इनको। और राज ठाकरे वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, गुस्से में कह रहा कहाँ छापना चाहिए आप लोगों को ये बताओ। फर्स्ट पेज। तो करेक्शन एंड क्लैरिफिकेशन, कौन देखेगा इनको? और देखो आया भी है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो भाई एक न्यूज़पेपर पे भरोसा नहीं करना है, उसी दिन गलती किया होगा, उसी दिन गलती हो सकती है कोई ना कोई, या कोई क्लैरिफिकेशन में मिस्टेक रह गई होगी, ठीक है। बट एनीवे द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एडिटोरियल को ऐसे देखो, इस सीट, अब देखो कोई सेंस है इस टॉपिक की नहीं है, है ना, इलेक्शन नहीं लड़ने ना। इट इज नॉट इजी फॉर जर्नलिस्ट टू बी फेयर रोबस्ट इन देयर दिस इंपॉर्टेंट है यार फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन सोसाइटी, बट एज सच व्हाट टू डू, फ्रॉम द आर्काइव्स की जरूरत नहीं है। 1973 कभी कभार यहाँ से बस ये चीज का ध्यान रखना कि कोई चीज हिस्टोरिकली न्यूज में तो नहीं है, फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कैन कम इन योर ऑप्शनल और इन योर जीएस। समटाइम्स टॉपिक्स यहीं से निकल जाते हैं कभी कभार, लाइक सपोज वी आर लिविंग इन 2023, तो 1973 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए? यहाँ से पता चल जाएगा, रोज आता है, कुछ काम का लगे तो उसको लिस्ट कर लो बस। देखो बस मैं आपको दो चीज सुना रहा हूँ। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग क्या फायदा हो रहा है इससे पढ़ के और क्या फायदा नहीं हो रहा है। विच आर्टिकल इज गिविंग मी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, किससे काम नहीं चलेगा, फ्रॉम विच आर्टिकल विच थिंग शुड बी एक्सट्रैक्टेड। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में मणिपुर के ऊपर बहुत ब्रेनस्टॉर्म करवाया। व्हाई डिड आई डू दैट? बिकॉज दिस टॉपिक इज कमिंग एवरी डे, it is coming from last 1 month or even before that। तो कुछ कुछ टॉपिक्स पे हमें ज्यादा सोचना है। अब जैसे ये वाले टॉपिक्स थे, इसको हमने जल्दी जल्दी ऊपर किया कि हाँ नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया लिखा है। मेरे काम की सिर्फ ये 4 लाइनें हैं, ऐसे में यूज करूंगा, फिर आपको थैंक यू लेटर मैं यहाँ पे लिख के भेजूंगा। ऑन दिस डे दिस आर्टिकल केम एंड आई हेल्प मी इन द एसे राइटिंग। इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, whenever you get good facts, convert them into this, make them graphic। फिर बाद में आप बोलोगे सर ये कैसे करना होता है, तो भाई ये तो आपने स्कूल से सबने सीखा हुआ है। whenever you convert them, don't write all the countries ABCDEFGHI सबका रिसर्च नहीं चाहिए इतना अपने को, सिर्फ 2 या 3 अच्छा रहता है। बेस्ट इज द डेटा इज ऑफ 3। इंडिया का हो तो कंपेरेटिव 2 का भी बहुत है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। लेट अस सी फर्दर इफ समथिंग इंपॉर्टेंट इज देयर। अब देखो धीरे धीरे करके द हिंदू भी सुधर गया है। द एनाटॉमी ऑफ यमुना फ्लड प्लेन्स, तो इसको पढ़ सकते हो, जिस्ट भी दिया हुआ है क्या क्या चीजें हैं। व्हाट इज, व्हाई इज यमुना इंपॉर्टेंट, है ना, व्हाई डिड सेटलमेंट्स इमर्ज, व्हाट इज दिल्लीज मास्टर प्लान। देयर इज अ मास्टर प्लान बिल्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मास्टर प्लान में जो करते हैं वो कुछ नहीं होता, वो द मोस्ट करप्ट बॉडी इन दैट मैटर। Okay, draft master plan for 2041 divides India into 18 zonal areas, designating Yamuna's floodplain as zone 0। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो इसको। If you are from Delhi, appearing in interview, very important topic, पूछ सकते हैं ना। You are saying sir मुझे IAS बनना है, ठीक है। दिल्ली में कितनी डिस्ट्रिक्ट है? यमुना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाती है? रेलिवेंट क्वेश्चन, आप ही कह रहे हो ना आपको बनना है, यू आर फ्रॉम दिल्ली, बाकी खुश हो रहे मैं दिल्ली से हुई नहीं, यमुना और फ्लड प्लेन उन्हीं से पूछना। जनरल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, नॉट स्पेसिफिक, बट दीज काइंड्स। लेकिन इफ यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस तो 200 वाला पत्ता खुल जाता है सीधा। समटाइम्स जब एक्स्ट्रा हाईएस्ट एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं ना,
इन्हीं चीजों के ऊपर आते हैं. ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्वेश्चन पता होना चाहिए. एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड नो. इफ यू आर इन अ डिस्ट्रिक्ट, यू डोंट इवन नो कि कितने स्कूल है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, बोलोगे आई एम डूइंग वेरी गुड फॉर द एजुकेशन. पहले खुद को एजुकेट करो. कितने हॉस्पिटल है पता तो होना चाहिए ना. दिस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. मतलब बन जाओगे उसके बाद तो करना ही करना है. बट राइट नाउ आपको समझना है कि इफ दिस क्वेश्चन कम्स, तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो चाहो तो इस पेज को कटिंग करके रख सकते हो अगर अपन इंटरव्यू तक पहुंचे तो. नहीं तो बीच में रद्दी भी आएगी. Delhi specific issue can be asked to anyone, but इतना अंदर नहीं घुसेंगे. If your not residence is not from here, अगर आपने इसको होम स्टेट नहीं डाला है तो आपको इतना अंदर नहीं घुसेंगे. बट पॉसिबिलिटी होती है. देखो ड्रामा वगैरह है. स्टेपल्ड वीजा, द इश्यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. ठीक है, इसमें कहीं छोटा सा कहीं एक्सप्लेन किया होगा इन्होंने. यहाँ तो सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं. देखो इन्होंने दे हैव गिवन डेट. चाइना इज डिसीजन टू गिव स्टेपल्ड वीजा टू एथलीट इज अ reversion of its section of 2011 to 20 when it began to give issue staple visa to Indians from Jammu and Kashmir and Arunachal Pradesh. वैसे तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा नहीं, जस्ट बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी गुड इशू. टू विच ऑफ द कंट्रीज, विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया चाइना प्रोवाइड्स स्टेपल वीजा. बट इन इंटरव्यू दे कैन आस्क. In interview, IR specific topics are very important. IR and economy. They ask a lot of questions from there. You can read this. This can be of useful, but question नहीं आएगा directly. It's just for the sake of. Not that much important. हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना. What will happen? Someday there can be very good topics. 6 to 7. जैसे आज 2-3 टॉपिक अच्छे थे. On some day there will not be even one single good topic. जब आप कहते हैं ना मैं तो आधा घंटा पढ़ता हूँ, 1 घंटा पढ़ता हूँ, इस चीज को उस पर ध्यान देकर रखना. Some day it may reach up to 1.5 hour, but some day it will even be 15 minutes. But that you should learn how to decide. Okay? And जो भी आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स अगर बनाना तो छोटा छोटा जल्दी जल्दी बनाना सीखो. इलेबोरेट नोट्स नहीं चाहिए अपने को, बिकॉज दे विल नॉट बी यूजफुल इन द एंड. नहीं याद रहेंगे वो. क्लाइमेट चेंज गोइंग ऑन, ये तो रिकरेंट थीम है आपकी. कुछ कुछ कंट्रीज की बस बेसिक प्रोफाइल ध्यान रखना. इन विच एरिया देर आर famine, in which area what is happening, in which area terrorism is there. In prelims, these kinds of vague facts are often asked. PLI scheme, prelim specific. What is this Fed rate hike for economics terms? फिर तो स्पोर्ट्स से एक आधा क्वेश्चन कभी प्रीलिम्स में आने लग गया है, बट इट डजंट मेक सेंस. अगर इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक स्पोर्ट, उसको कितना याद कर पाओगे? याद ही नहीं हो पाएगा. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ओके, so online students, I hope you were able to understand. We had a very interactive session on this. Okay, learn what to do, what not to do. For every part you should have a plan. Like in that class also I discussed important facts, these diagrams, charts, please make them. Important case studies, list of topics which are going to be very important for your preparation. Like for prelims, mains, you can make a list. If you start doing this, you'll also understand how productive you are. I suppose if you make a list for prelims, in December at least you can pick it up. But these were the important topics that I thought, तो उनको कर सकते हो कम से कम. When you clear prelims, you're writing mains, you'll already know these are the important topic for mains. And for mains, you'll always have these फैक्ट्स, डायग्राम, चार्ट्स. पहले से ही सब कुछ होगा, पहले से ही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. सो
if we see from notes perspective, just like you have seen for IR, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है यहाँ से एग्जैक्ट नोट्स बनाने का. It is better to refer to your study material, which could be any magazine. But please remember one thing, there are only 4 questions which are going to come from IR in mains. In prelims, the method of understanding IR is a bit difficult. वहाँ से कुछ भी आता रहता है. Some topics directly related with environment, some linked with economy, some with this, some with that. So in IR, facts are going to be very important for prelims. Organizations are going to be important for prelims. It means it is important that you focus on some restricted type of thing. Okay, that is bilateral relation, multilateral, and one or the other organization. Like some organizations are very important for mains. WTO, UN. UPSC has asked WTO question thrice. In last 10 years, if you see from 2013, it has thrice. That's why seeing the PYQ is very important from prelims point of view as well as mains point of view. If I see polity, like the provision of bill you can see here, you can make short notes, not an issue. But always be aware that this article will not be enough. If you're thinking इससे हो जाएगा काम, तो एकदम से नहीं होने वाला. You have not prepared the topic well enough. Okay, case studies वगैरह for GS4. Pick up examples, good examples, bad examples for ethics, quality wise. That can be done from here. Okay. Environment specific notes बना के कोई ज़्यादा फायदा देखो हो नहीं रहा है. UPSC is in a league of its own. Only from mains point of view, it is easy to make notes that you can do, like for climate change, of any specific thing. Okay, I would also include like for even for essay, good articles, introduction, conclusion, do that. Other than that, if we see other subjects, let us start from paper 1 itself. In paper 1, we have society. For society, please, some examples can be taken from here. Very less number of articles will come on society. So that's why if there is any specific watchword like work from home, UPSC asks a question on this. Impact of globalization on technology, UPSC again asks a question. Syllabus is the key. Just pick up the example from the newspapers. That's it. For geography, I would say specifically focus on NCERT. If we go second level from current affair point of view, it would be better to go for those areas from where UPSC is asking question, like Antarctic, Arctic. UPSC को एक अलग ही प्यार है. Arctic 2-3 बार आ चुका है. In mains, in prelims, it is going for what? Maps, world geography, Indian geography. Okay. On the basis of this, you have to also identify कि मैगजीन में से क्या पढ़ना है, क्या फायदा है. उनको तो यार 100 पेज देंगे आपको, उनको लगा कि आपके पास मटेरियल नहीं है, लो रखो पढ़ो. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड बी क्लियर इनफ कि करना क्या है. लेट्स गो टुवर्ड्स पेपर 2. इन पेपर 2 वी हैव पॉलिटी. पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हो, अच्छे आर्टिकल आते हैं. जुडिशरी स्पेसिफिकली लाइक हमने आज पढ़ा, ठीक है, तो वो पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हो. थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स भी बनाना हो तो चल सकता है, एटलीस्ट फॉर द जजमेंट्स, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पॉलिटी तो ऑलरेडी आपके पास है ना लक्ष्मीकांत में. बेसिक लेवल क्वेश्चन, सम इमर्जिंग टॉपिक, इमर्जिंग कीवर्ड्स, लाइक जैसे यहाँ पे था इमर्जिंग कोई कीवर्ड है, जैसे मैंने बोला चार्जशीट, पता होना चाहिए भाई. आज की डेट में प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में नहीं आएगा. तो वो टर्म्स आपको पेपर से निकालनी है और पढ़नी है, समझना है उनको. यूपीएससी आजकल यही कर रहा है. बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने पूछ लिया बेटा एबीएस में कि कौन सी फंक्शनिंग होती है बता दो, फिर जो सबसे तेज गाड़ी चलाता सब उसको मार रहे हैं. अब बता ना, गाड़ी तो बहुत चलाता था. तो awareness in and around us, that has become the key in this exam. तो पेपर 2 में पॉलिटी में छोटे मोटे टॉपिक्स पे नोट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैगजीन से भी देख सकते हो वहां पे, लेकिन जजमेंट्स को ध्यान रखना. आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलिटी तो स्टैंड अलोन हो सकता है, बहुत अच्छा टॉपिक वहां पे ना भी मिले. ओके, देन वी गो टुवर्ड्स गवर्नेंस. एग्जांपल्स मिल जाएंगे, इसके अलावा सब स्टैटिक है, वो स्टैटिक अपना बेसिक नोट से करो. आईआर का मैंने आपको बता दिया, आईआर इज ओनली 4 क्वेश्चन इन मेंस, डोंट ओवर किल इट. देन वी गो टुवर्ड्स पेपर 3.
इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स देखो आपने देखा भी होगा, द हिंदू डजंट कवर मच ऑफ इट, तो इसके लिए आप किस पर डिपेंड करोगे, इंडियन एक्सप्रेस। ओके, आगे कभी फिर इंडियन एक्सप्रेस का ले लेंगे, आज बहुत टाइम हो गया, तुम लोग भी थक गए होंगे, ठीक है, फिर कभी एक दिन इंडियन एक्सप्रेस ले लेंगे। तो समझ में आई ना आज चीजें, देखो कैसे पढ़ना होता है, मुझे भी ये चीजें 3-4 साल में समझ में आई थी। हम भी ऐसे ढूंढते रहते थे कि यार ये मैगजीन अच्छी है, ये मैगजीन अच्छी है, वो अच्छी है, ये अच्छी है। जब हर जगह से धोखा खा लिया तब समझ में आया कि नहीं, कुछ और करना पड़ेगा, दिस इज नॉट वर्किंग आउट। एंड व्हेन आई वाज एबल टू डू सो, तो अच्छे अच्छे मार्क्स भी आए आपके, तो वो ध्यान में रखो, सारे टॉपर्स यही चीजें कर रहे हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंट, एनीबॉडी इज डूइंग। देन इकोनॉमिक्स में if you see from prelims point of view, yes, it is very important from exam point of view as well as in mains. In mains it is relatively more static, economics. In prelims it is very dynamic, questions are coming from stock market. Financial literacy, very important. Okay, financial literacy, any important initiative taken by RBI, government of India in economic realm, they will ask, they will always ask. And they have reduced the status of the previous economy. प्रीवियस इकोनॉमी से मतलब है वो बेसिक लेवल बजट क्वेश्चन, ये वो वाले टॉपिक्स कम हो गए, जो आपको सारे फाउंडेशन में पढ़ाएंगे बैठा के लोग, बैठा के वहां से क्वेश्चन ही नहीं आने, कम हो गए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो द सिलेबस ऑफ इकोनॉमी हैज एक्सपेंडेड, है ना, वी हैव कम टू 5th नंबर पे आ गए ना, so our economy is also in the transition phase, so you have to recognize that phase in the economy. So here please make a list of the concept which come in the prelims, ठीक है ना, न्यूज़पेपर के लिए जरूर उसमें बनाओ। मेंस में तो देखो 3 to 4 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ एग्जांपल्स लेके रख लो, पीपल लाइक अशोक गुलाटी एक्सेट्रा, इनके आर्टिकल आते हैं, उनमें से लेके लिख लो अच्छे से, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी इज लार्जली स्टैटिक, ओनली एग्जांपल्स आर रिक्वायर्ड, टॉपिक्स कहाँ से बन सकता है वो देखना है आपको, इतना है। बाकी तो आपके जो मेन नोट्स है उसी पे काम चल जाएगा, अलग से कुछ इंटरनल सिक्योरिटी पे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है न्यूज़पेपर्स में, यू मस्ट हैव सीन दैट आल्सो, टू मच विल नॉट बी कवर्ड। साइंस एंड टेक कंप्लीटली करंट अफेयर ओरिएंटेड, so here you have to do a little bit of effort, okay, whatever technology which may not be covered in the newspaper also, be aware about it. Artificial intelligence, okay, so many kinds of technologies are coming, 5G, जितना भी है इन एवरी फील्ड, IT, बायोटेक, डिफेंस, सबसे ज़्यादा फोकस डिफेंस पे इतना फोकस मत करना, बट द फर्स्ट 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटेक एंड IT, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम देयर, सो प्लीज यू कैन वॉच सम यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो ऑन साइंस एंड टेक, बिकॉज समझना मुश्किल हो जाता है। इफ आई आस्क समवन व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, तो वो सिर्फ थियोरी पढ़ के इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन। So here I would recommend in science and tech, watch some videos, okay, it is going to be very helpful. Paper 4, ethics, whatever is happening around you, administration will always take some specific steps, find out the qualities in the events, वो GS4 बन गया आपका। So from mains point of view, this is how you have to prepare. From prelims point of view, I have already told you maximum questions comes from economics, and here also new terms, okay, whatever new schemes etc are coming, सब पे ध्यान रखना है। इंडियन एक्सप्रेस बिकम्स वेरी रेलिवेंट, बिकॉज हिंदू तो आपको हवा ही नहीं लगेगा, उसको लगेगा नहीं इकोनॉमी होती भी है, वेरी फ्यू आर्टिकल्स आर गोइंग टू बी देयर, ओके। देन साइंस एंड टेक फॉर प्रीलिम्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं इन प्रीलिम्स, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, so I would not want you to waste your time for 3 to 4 questions. Focus on the remaining part, because the cutoff is going even below 85 or 90, उससे नीचे ही है, तो हमारे पास और सब्जेक्ट्स भी हैं, वहीं जाके हमने सही शहीद नहीं होना है, okay, so that's how you have to manage things. IR questions are coming, organizations, important countries, geography, always read IR with world geography, it will be interesting also, it will be rewarding also in the exam, okay. I hope all of you learned few things today, okay. Yeah, I'll take a specific session for that, वो next year फिर से next week देख लेंगे, okay. If you have any doubt with respect to newspaper, please ask now. Online students,
हाँ नहीं यूट्यूब आपके पोर्टल पे रहेंगे, हो सकता है बाद में चला जाए, आई डोंट नो। प्रशंसा विद रिस्पेक्ट टू देखो मॉक टेस्ट सीरीज, एवरी इंस्टीट्यूट ट्राई द कि भाई हम टेस्ट सीरीज बनाए, ठीक है, बट समटाइम्स इट कम टू द यूपीएससी, समटाइम इट डजंट, एंड यूपीएससी एज ऑल ऑफ यू नो इज द किंग ऑफ एवरीवन। आप कितना भी करके चले जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लर्न हाउ टू स्टडी वेल। इफ यू हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस थिंग्स तो वैसे अच्छा हो जाएगा, कोई भी टेस्ट बना लो। But yes, mock test would be required. We will also be launching test series within 1 week. तो मैं आपको उसके लिए बता दूंगा what different we are trying to do, ठीक है, तो आप वो सुन लेना, then accordingly you can take the decisions. But one thing which is very clear, you have to do a lot of hard work. Only by doing one test series एक लेवल तक ही पहुंच पाओगे. Above that, it's about how you study. If you're not studying very well for science and tech, for economy, current affairs नहीं पढ़ रहे हो ढंग से, तो कैसे काम चलेगा? कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं कर सकती वो तो आपके लिए, बट यू हैव टू लर्न थिंग्स, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू मैगजीन्स, देखो देयर आर मेनी मैगजीन्स, फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू मेजॉरिटी ऑफ देम आर ओके, इट्स फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे आर ऑफ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, एंड यू मस्ट हैव रियलाइज व्हाई, ओके। सो जब भी पढ़ रहे हो, सी द टाइप ऑफ टॉपिक विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, सी द की PYQ जस्ट लेफ्ट एंड राइट ऑफ योरसेल्फ, पढ़े वो देखो, फिर उसको देखो काम का कुछ है भी कि नहीं है। लेकिन इकोनॉमी फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ टॉपिक्स आर बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी, वही पीपीपी पे क्वेश्चन आता है बार बार, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, दीज आर द टॉपिक्स वेयर यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन, और हम ये छोड़ छाड़ के कुछ अलग ही दुनिया में लगे हुए हैं, बिकॉज वो करंट अफेयर में आया था, देखा था हमने एक बार। ऐसा नहीं चलता भाई, you have to mix both things, static along with the current, and in mains UPSC is going more towards static than current, reason being static में difficult question बनाना आसान है, current में तो क्या बनेगा, अगर कोई एक ये आर्टिकल पढ़ेगा तो क्या बना लेगा क्वेश्चन, बेसिक लेवल क्वेश्चन ही बनेगा। That's why they always try to ask question from static part, very few question will come from the current affairs in mains, even in paper 2 and 3, specifically telling you, and it will not be, अगर आ भी रहा है तो कई बार वो इस साल का करंट अफेयर भी नहीं होगा, it will be from last many years, थीम बनती हुई आ रही है। if they ask what kind of environmental judgments have been passed by Supreme Court of India, तो वो एक साल का क्वेश्चन है क्या, 20 साल का क्वेश्चन है यार। अब वो लोग करंट अफेयर पढ़ना तो बकवास होता है, ये होता है वो होता है, फिर शुरू हो जाता है वो एक अलग ट्रोलिंग शुरू हो जाती है फिर। तो बेस्ट थिंग इज ऑलवेज आइडेंटिफाई द ट्रेंड, सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके हिसाब से करो। लाइक देयर इज अ वेरी अनईजी रिलेशनशिप बिटवीन द आप गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाई इज इट हैपनिंग? व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज वी हैव दिस आर्टिकल 239AA, ठीक है ना, उसमें जो रिलेशनशिप बना हुआ है दैट इज नॉट एबल टू हेल्प आउट। Various judgments have come from Supreme Court. This question was asked by UPSC in 2016. या एक बार थिंक बीच में फिर से पूछा 2019 और 20 it came again the issue। तुम्हें लगता है इशू रिजॉल्व हो गया है? No, it is going on from last 10 years. So it is your responsibility to identify which issue is important for India's federalism. And once you identify it, तो थोड़ा सा और कहाँ से दिखेगा? अब आप बोलोगे सर मेरे को तो आए हुए 3 महीने हुए हैं, आप इतनी सारी चीजें एक्सपेक्टेशन क्यों मेरे सर पे डाल रहे हो? अरे भाई PYQ उठा के एक बार देख लो टॉपिक वाइज, सब पता चल जाएगा 10 साल में पॉलिटी में क्या क्वेश्चन आया है। उसी को आइडेंटिफाई किया, उनके हिसाब से अपना न्यूज़पेपर रीडिंग स्ट्रेटजी बन गया। ओके, so some things are not very clear and those of you are preparing, please prepare for mains also. Don't see it from prelims point of view. Many time it will happen, आप सोचोगे prelims कर लेते, अभी तो prelims आएगा। If you clear prelims, you'll cry every day.
बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है मेंस लिखने की, आपको मिल रही है और आपको कुछ आता नहीं है। आई हैव स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, 2 बार से नहीं होता, इस बार हो गया। अब सर जीएस कहाँ से करना है, ऑप्शनल कहाँ से करना है, दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कम्स टू मी। तो मेक श्योर कि आप मेंस भी करें। ओके, नेक्स्ट वीक मैं आपको एक दिन बता दूंगा स्पेसिफिकली कि प्रीलिम्स और मेंस में व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद, तो वो आप देख लेना एज पर योर रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, बट मेक श्योर कि हम अच्छे से करें, हम अच्छे से पढ़ाई करें। whenever we are studying newspaper there should be a purpose behind it. The purpose is very clear. I have to clear prelims as well as mains and identify the keywords, identify the important facts, data. Every subject has a different demand of current affairs. It cannot be taken by one newspaper, it cannot be taken by one magazine. Both will fail. Like today we saw some of the topics, were they covering each and every angle of that topic? No, they were not. So it means even just newspaper doesn't help. So in some areas, specifically in mains related, magazines are going to be helpful. But in prelim specific, case study, data, introduction, conclusion, keywords, you have to do the hard work. And this is where note making is easy. It's not difficult. Note making difficult पता कब होती है? जब एक बड़ा टॉपिक ले लिया और उसके आसपास के 25 नोट्स बना रहे हो बैठ के, तो वहां पे मैगजीन के पास स्विच कर जाओ। एंड मोस्टली इन आईआर ठीक ठाक लेवल का कंटेंट आपको मिल जाता है, कोई भी मैगजीन ले लो सब में मिल जाएगा, ठीक है। बट द ओनली थिंग इज दे विल नेवर कवर दीज काइंड्स ऑफ केस स्टडी, डायग्राम, चार्ट्स एक्सेट्रा, ये सब नहीं मिलेगा उसमें। और आपके द स्पेसिफिक एग्जांपल्स व्हिच यू हैव टू राइट, व्हिच कैन गिव यू द एडवांटेज इन द मेंस एग्जामिनेशन, वो इतना जल्दी से नहीं मिलता है मैगजीन से, बिकॉज एवरीबडी इज रीडिंग द सेम मटेरियल। एंड व्हेन एवरीबडी रीड्स द सेम मटेरियल, गेट रेडी कि वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई एवरी टॉपर से कि खुद का कुछ तो नोट होना ही चाहिए। दिस इज द स्मार्ट वर्क। मैंने आपको पूरा स्मार्ट वर्क, आई हैव जस्ट मेड इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्क। आइडेंटिफाई कहाँ पे खुद नोट्स बनाने हैं, कहाँ खुद नहीं बनाने हैं, बस इसको समझ लो अच्छे से। एक हफ्ता एक महीना करके देख लो, मैगजीन उठाओ 2-3, देखो जो तुम काम कर रहे हो एग्जैक्ट सेम काम कौन कर रहा है। Just see, it's that easy. You realize कि ये करने का फायदा है नहीं, ये बना के दे ही रहे हैं, मैं बस पढ़ लेता हूँ और अपने कीवर्ड्स और डेटा को सेगमेंट कर लेंगे। Why to worry? But once you do this, you identify everything. You have to give a good test series for prelims as well as mains. ठीक से 6 से 8 महीने अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा for mains also. And for mains specifically, I'm telling you, this is a time where you cover those areas like ethics, cover internal security, IR also, society, governance, the areas which are not important in the prelims, that should be covered in next 2.5 months. And the same way मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी यही पैटर्न बनाया कि यार पहले ये कवर होना चाहिए, then we should go with those areas where we have pre-com mains kind of syllabus. But majority of the test series which you will see around, उसमें क्या होता है, वो स्टैंडर्ड सेट है, पहला पॉलिटी होगा, फिर हिस्ट्री आएगा, फिर ये आएगा, वो आएगा। At times it becomes very difficult to handle such test series. So that's why we have already changed the pattern. तो वो मैं आपको next week हम आपको शेयर कर देंगे, पोर्टल पे भी डाल देंगे। Those of you who wish to join it, you can join it. It's up to you. ठीक है? तो और कोई क्वेश्चन किसी काइंड का? उमा, आई होप यू गॉट योर आंसर। देखो चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि मैगजीन छोड़ दें, घर छोड़ दें, इंस्टीट्यूट छोड़ दें। अगर उससे मेरे पास सॉल्यूशन होता ना, मैं सबसे पहले वही बताता, मैं बकवास ही नहीं करता आगे। क्यों मैं अपने 3 घंटे खराब करूँ यार, एक एक चीजें बता रहा हूँ आपको। अगर इतना आसान सॉल्यूशन होता कि मैगजीन छोड़ दो, जिंदगी वैसे वहीं से स्टार्ट होगी आपकी। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। पहले ही बता देता यार, दिस इज नॉट हाउ इट इज। यूज आपने करना है, डोंट गेट यूज्ड बाय द मैगजीन्स। मैनी टाइम व्हाट हैपेंस, हम सोचते हैं कि वो तो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है आपके सामने ना, वो बेस्ट है। यू आर द एजेंसी, यू आर द थिंकर, आपको यूज करना है। आप क्या कहते हो, ये तो 100 पेज का दे दिया, तो मत पढ़ो 100 पेज। किसने कहा 100 पेज पढ़ने के लिए? उसमें से 20 पेज निकालो जो काम के, हटा दो बाकी सबको। पढ़ो कैसे निकालोगे? व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर इफेक्टिवली। अगर आपके टॉपिक की जो लिस्ट है उससे मैच कर रही है, आपको समझ में आ गया, हाँ चलो ठीक है, उसके आगे लिख दिया,
दिस मैगजीन पेज नंबर दिस, काम हो गया। जब रिवीजन करेंगे तो यहां से करेंगे, पर्सन बिकम स्मार्ट। ऐसा मत सोचो कि यार जैसे एनसीईआरटी की बुक क्लास 12 तक मिलती थी, जैसा कॉलेज में होता था कि ये बुक पढ़ लेना सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। नहीं है तो जो टीचर है वही ट्यूशन भी दे देते थे शाम को। ऐसा यार यूपीएससी में होता तो हर कोई वही मॉडल फॉलो कर लेता। आप लोगों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं यार, थोड़ी तो मेहनत लगेगी, 2-3 साल तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और थिंकिंग तभी आएगी व्हेन यू आर एबल टू कवर द होल सिलेबस, व्हेन यू कैन थिंक क्लियरली। तो ये सारी चीजें आप जरूर करो, ठीक है। सार यही है, हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रेटजी है। बेसिक लेवल जैसे आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इवन साइंस एंड टेक, यू शुड अंडरस्टैंड इट। सिर्फ नोट्स बनाने मत भागो। अब समझ ही नहीं आता हो तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नोट्स बनाए जा रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, तो यार फायदा ही नहीं है उसका। जब क्वेश्चन आएगा यूपीएससी विल आस्क अबाउट द एप्लीकेशंस, आपको अगर समझ नहीं आता तो एप्लीकेशन कैसे बताओगे। अगेन यूल से मैगजीन से कुछ नहीं आता है, मैगजीन का काम ही नहीं है वो। मैगजीन आर डन फॉर मार्केटिंग। अगर उससे किसी की हेल्प होगी तो वो मात्र एक, क्या बोलते हैं मूवीज में, क्या था स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर, हाँ। अगर आपको कुछ फायदा होगा तो आपकी किस्मत, प्लीज सी इट दैट वे। It's just like that. They're coming up with this. Okay, it is helpful to the student. I'm not saying it is not helpful. It is, but for only those students who know how to use it. It is not useful for those who don't know how to use it. For it becomes a burden. एक हफ्ता लगाते हो मैगजीन पढ़ने में, on the next very day you forget everything. Then you come to the same point. करना क्या है? Differentiate between topics. Differentiate between information on the basis of prelims and mains. This is the most important requirement, and I was able to do it for many topics that we read today. ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर देंगे, उसको अपने हिसाब से देख लेना क्या इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, like this you can see how to read. We have done how many hours. This also I have clarified. In some of the days it may take even 2 hours, but it is justified because the topics are of that level. On Sunday even 5 minutes भी बहुत होते हैं, because many of the articles which come on Sunday they are of no use to us. Is reading the newspaper enough for UPSC? No. You have to read, but along with this you have to do the syllabus also of mains. You cannot just say कि नहीं मैं तो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, not going to happen. Syllabus number 1. Second, on the top of it, case study example, they will come from the newspaper. For some specific topics where you require research also, magazines. This will be the way. Do we have to make notes of the newspaper? Yes, 100%, but not big notes. Make 4 copies, yes, 1 2 3 4, divided into different parts. Specifically write this is important for prelims, this is important for mains, so that you can revise eventually. How can I read the newspaper fast? Like I have done in the last 3 articles. I was able to identify कि हाँ इसमें 3 पॉइंट है, 3 different पैराग्राफ. These are the limitations. इसने पॉजिटिव कुछ दिया नहीं है, मुझे खुद करना पड़ेगा. Because no question will say कि गवर्नमेंट के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बुराई करो आज. चुगली ग्रुप तो है नहीं वहां पे, है ना. They will always ask for assessment of some act. They will not say just come and complain. This is one initiative which is going on in our Telegram groups. You can read it also. Okay, but the important thing is what I discussed in the initial half an hour roughly, वो कोई नहीं करने वाला आपके लिए. आपके YouTube पे बहुत सारे वो भी चलते रहते हैं, हाउ टू रीड द एडिटोरियल्स. उनको खुद समझ नहीं आता, जो देख देख के बस बोलते रहते हैं रिपीटर्स की तरह, which can be done even by AI today. So beware of this. Okay, न्यूज़पेपर रीडिंग में हेल्प लो, बट किसी पे पूरा एंटायरली डिपेंडेंट मत रहो. यू विल नेवर हैव इंडिपेंडेंट इश्यूज. इंडिपेंडेंट आपका थिंकिंग तभी जनरेट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट, एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट. दिस इनिशिएटिव कवर्स इंपॉर्टेंट थिंग्स, न्यूज, which are the important articles, so you can read it also for the sake of understanding. Like if a question comes on food grains, so yes, understand, yes, it is important for GS paper 3. Open market scheme, what is this open market scheme, becomes important for your prelims.
So this is how many of these articles we have written also related segments, कहाँ कहाँ पे आप इसको use कर सकते हो. Okay, the irrecoverable connection between anemia and maternal health. So we have written maternal health, inclusive growth, hunger and malnutrition, public health, as well as policy initiatives. Everywhere it is linked. So it is mentioned here. Source is also mentioned. Okay, so these various articles are coming on daily basis. India Digital Enable, it is mentioned. 1 trillion economy. We are mentioning it. Why digital India is important. These are the keywords. Cyber law. All this is mentioned. Okay. If some specific issue is with respect to trafficking, so we have mentioned here also women and child, international relation also, because many of this trafficking it is done from the poor countries or war conflict countries, poor countries like Nepal as well as Bangladesh. It happens. Many of you don't know, bhai, many women they come from Nepal just for the sake of marriage in India. You know this. Why does it happen? Because in India everybody should get married, even if they are not getting anyone. So क्या होता है उसके टाइम पे? Trafficking also happens. There are so many things which you have to interconnect. Okay, so that's it for today. We needed to understand all these things, and I hope I was able to discuss them. One of the students said, मैगजीन से सिर्फ फोटोकॉपी वाले का फायदा होता है. बात तो सही है आपकी. चलिए ठीक है. विल मीट ऑन मंडे. डोंट फॉरगेट आई एम ए हिस्ट्री टीचर ऑल्सो, है ना. उस दिन आके बोला सर वो एक बार और.